Guys, we're back and this Impact 3.3 आ चुका है स्कैरम और उनके साथ में स्ट्रीम करने के लिए मेरे को थोड़ा सा डाउट हिचकिचा रहा था मैं यार मैं करूँ या नहीं करूँ क्योंकि मैं उतना ज़्यादा इसको खेला नहीं हूँ और उतना ज़्यादा मेरे को पता नहीं और मैं पैनिक मोड में कुछ भी यूज़ कर लेता हूँ कुछ भी यूज़ कर आई मीन सीरियसली कुछ भी यूज़ कर लेता हूँ सर पैनिक मोड में Traveling to other worlds is all that anyone seems to be writing about these days. Goodness knows what they find so disappointing about their own world. एंड हाँ गाइस मैं आज पुल भी करने वाला हूँ हम पुल भी करेंगे आज क्या बचा ये एक ही बचा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ वो वाला पहले कर लूँ क्या हाँ वाला करो सर आर्टिफैक्ट फार्म नहीं कर पाएंगे हाँ वही तो कि नया वाला जो मैंने हाँ मे भी शाओ के अलग से डोमेन है बट नया वाला भी अच्छा है सुक्रोज क्या कर रही है यहाँ पर अब मॉन्स्टर पे क्या वापस कमीशन क्वेस्ट नहीं मॉन्स्टर है क्या हाँ तो आपका भी वो चालू हो गया हाँ मोड कार्ड्स बढ़ने Thanks for watching my stream. Namaskaram. I don't know. Indeed, it has. I heard that you've encountered some. My abusing his stuff. Define is not so. एक बार ट्राई करने से 60 They प्रीमोज were मिल रहे हैं obvious, उसको without any evidence. I Game. see. But try Well, करना is Naturally, वहाँ पे लिखा हुआ I've है dealt with similar पूरा issues एक छोटा hundreds सा of quest है times. Give me पूरा a करना moment to पड़ेगा consider the Oh, best okay. approach in this scenario. All right. ओके ओके Let's approach ठीक it है this way then. huh? अरे यही If पे I remember करना क्या है correctly, Second Life and Wanyo Boutique are old business. In that case, I know what you mean, Miss Ganyu. Exactly. Let's start with Wanyo Boutique. The owner's name is Bola. Yes, you're right. हाँ ऊपर पर क्या बोल रहा है कहाँ जाना है भाई कैट्स तेरे बोलो ना नहीं वो तो बाद में जाएंगे यार ये कमीशन क्वेस्ट है ना कहाँ बोल रहे थे ऊपर और ऊपर जाना है टावर पे चढ़ना है क्या यहाँ पे चढ़ना Aha, we meet again, traveler. And you must be from...
अबे I suppose you're वा- about to place a big order. That won't be necessary, Mr. Bolai. हट जा। Wanyo Boutique's credit is not sufficient to accept orders directly from Yuahai Pavilion. Should we need to place such an order, we यहाँ would पे है certainly ये। go to Second Life instead. I'm so What? high. Second Life. That rat. Yeah, Well- ना बोल रही I'm so high. Second Life's credit has always been excellent, and based on their tax records, their business is thriving. तो भाई से जाके बात करना पड़ेगा अपने को Hmm. वापस। Tax Aye. records. Thriving. अरे तेरी बहन बोल रही she's Huh. so high. Is there anything you'd like to share with us, Mr. Don't let yeah. that rascal fool you. I know his dirty tricks best. हाँ If you वो don't विंडमिल believe के me, show me टेरेस his पे tax विंडमिल records. के टॉप पे जाके I'm खड़ी है और sure वहाँ I'll बोलती है I'm find so high. something fishy in there. हो गया You ना? know चल, Second Life's commission business so well? quest. Of ज़्यादा high ना हो course. जाए। Ugh, their every Mm. transaction makes my blood boil. I'd rather lose money myself than see that rascal make some. Okay. अब क्या करें Well सबसे then, पहले? please look over this tax record. Oh, of course. I'll read very line by line and क्वेस्ट करना पड़ेगा यार सबसे पहले वो अपने को। here that exquisite wooden furniture set he bought from Fanmu Venom? Carpenters at the beginning. Look at the tax record. सबसे पहले वाला Not a क्वेस्ट word पूरा about that कंप्लीट करना furniture. पड़ेगा यार। डांस And he kept all the स्लैब वाला profit for himself. स्लैब जो भी I है see. उसके He बाद ही must पुल have कर gotten rid सकेंगे of all अपन। the documents related to फिर this अपन उसको- transaction. No wonder there मतलब- was no trace of it. पुल लॉक नहीं है लेकिन फिर I भी told you so. आप उससे पहले एक बार Just as ट्राई I कर लो मतलब expected. क्या नाम उसका ट्रायल जाए ना I can't wait to watch him Try कर लो हाँ squirm. उसको। टेस्ट पेन भी तो है या But बराबर है। Miss देखो Ganyu, पसंद आए तभी पुल despite करना He वरना might have destroyed all the evidence. बाकी कैक्टस बैठ गया ना You're right. I hope so. Let's go to Fanmu Carpenters. Thank you for shining up. Oh, please. It's all right, Weishi. Oh, that's ओके सबसे मेन आया है स्कैरामोच उसको अपन अभी टेस्ट करने वाले। ओ भाई ये मॉर्टल कॉम्बैट का वो नहीं लग रहा कुंगला? मॉर्टल कॉम्बैट का कुंगला है भाई ये। इसी पे नहीं भैया एक सेकंड ना मेरे को चेक करने दो क्या दिया है। आज लेवल 80 का है ये वेपन। इसके पास में क्या घंटी? इसका सिग्नेचर में ये घंटी लेके घूमता है। ये बहुत हम के ओए इसको नए वाले आर्टिफैक्ट दिए हैं। के लिए तो आए ये ठीक है यार। ओ भाई ये भी वर्फुल बनाता है। क्या मैं ग्लाइड कर रहा हूँ? ओ मैं ग्लाइड करते करते मार रहा हूँ। ओ भाई ये सही था, ये सही था। और नीचे में वो उसका अल्टीमेट फाइट देखना चल रहा था, अल्टीमेट चल रहा था। हाँ उसका अल्टीमेट देखा मैंने। वर्फुल बनाता है ना और वो क्या बोलते हैं यार ऐसा हाथ मारता है बहुत जोर और वो ठीक है। इत तो ट्राई कर रहा हूँ मैं। And catch me. Basically ये Well, King's a real hey, I heard that. Paimon. Master Lu, we've just come to. Why would the cheese sink? Your very Dongsheng bought some furniture from you at the beginning of the year. Do you still have the? Oh, it's about Second Life. It was a big order. How could I forget? Sure enough, Mr. Balai was right. Could we perhaps borrow that Okay. invoice? बहुत Of course you can. बहुत नहीं but लेकिन थोड़ा बहुत हेवी तो जा I'm- रहा ही है। I only do. As for but Hmm. some trouble since you हेवी जा need, रहा है So that's what. I'll लेकिन फिर leave भी you ठीक to. है, चल सकता है।
Take back the warehouse. Find the. Wait, I think I saw one of those. Oh, ठीक है, Paimon okay. sees them too. Okay, okay. It's one of the Fatui. Okay, okay. तो They must be plotting something against. Maybe they're the scoundrels who invaded. Ever since Osiala, we won't cause us. Besides, my intuition. Then what are we waiting? next है ये क्या है? Faruzan. ये बहुत कमाल, बहुत Okay. कमाल। ऐसा तो ये सही लगी सबसे। किससे मारती है? अच्छा, ये भी बो है ना? Emerge. Propagate! There is no escape. Right here. Oh. एक सेकंड। Come on out. अच्छी यार दिखनी। Pavonius Warbow. Okay. वो वेपन देने के बहुत सारे ऑप्शन। Let's do that. क्या बात कर रहे हो? हाँ, स्ट्रिंगलेस भी एनर्जी रिचार्ज मांग रही है, प्लेस अटैक और एनर्जी रिचार्ज मांग रही है। नहीं इसको एलिमेंटल मतलब स्ट्रिंगलेस देना भी अच्छा है। You scoundrels! I think you've had enough. Plan! We just taught you a lesson. If you don't spill whatever you're, we'll be forced to use harsher methods. I'm telling the truth. There's If you're telling the truth, then why would you? fine. If you really want to know, the About to. big berries over there. I must admit, I didn't expect you to come up with खासा such a तगड़ा solution. डैमेज Not दिया an है। excuse. I rarely have a free morning, and I heard that there were fresh berries in this area. Think about it. I'm here alone, and Jinxa Village is nothing more than a retirement spot for old people. अच्छा है। What could I be scheming anyway? Judging by how he's looking at us. So you have nothing to do with the occupation of Fanmu Carpet? Vanmo Carpenter's warehouse? Where's that? I और swear, क्या है? I only came here to pick berries. That's all. So it wasn't the Fatui who took over Master Lu's warehouse after all. Guro, Yanfei. Yanfei तो है मेरे पास में। Guro I ट्राई कर लेता हूँ misjudged एक the बार। situation and our exchange Story only quest में खेला था represents my इसको मैंने। personal views. Guro If you खेला wish नहीं it था, so, देखा था मैं। You can file a complaint to the Ministry of Civil Affairs. Exchange? This woman, she's clearly aware that the Ministry of Civil Affairs wouldn't side with us, Fatui. Yes, precisely. As an But alternative, don't waste you my may time. try to solve Maybe this second. problem with force once again. Paimon's in. Darn you. How can you wear that solemn face while bullying me like this? What's your choice then? I'll get back to my berries. What a bittersweet ending. I made a laughing stock. No worries. So this is the warehouse. Seems like those troublemakers were nothing more than a few hair churls. Let's show them what we got. Right here. Emerge. Spring forward! Nothing lasts forever. Show them. माइक से आवाज आ रही है ना? और सारी क्या? जोर से नहीं, लेकिन आ रही है। ध्यान से सुनो, आ रही है? नहीं, ऐसी आ रही है। ओह शिट। एक नया डोमेन आया है। ये तो लूज नहीं है। अभी आ रही क्या? नहीं, अभी नहीं आ रही। Allow me. आई तो बता। गेम में जाओ ना, जब वो कन्वर्सेशन होता है ना, तब Come on out. Right now. हो रहा है? आ रहा है? आ रही है। हाँ। अंडरग्राउंड माइन जाना पड़ेगा मेरे को इसके लिए। मैं ना वेनम ये ना ये वाला कंप्लीट कर लेता हूँ यार, फिर आता हूँ यार।
काम करता मैं What a नहीं ठीक है nuisance. तो कोई नहीं, इतना ज़्यादा भी नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने खुद यहाँ पे अपना Emerge. Right साउंड here. वगैरह चालू कर दिया तो मुझे मेरे इसका भी आवाज़ Fresh आएगी ना। maneuver. Hold the line. Propagate! अब होगा, नीचे जाना है। Illusion shattered! Show them. अच्छा ये All clear. वाले Let's खेत look से around नीचे for the कूद envelope. ये वाले गड्ढे से नीचे जाते हैं। भाई पड़ी रे। This one is an invoice from One Min Restaurant. Some dining tables and chairs. That's not it. ओए This one is व्हाट, मैं यहाँ से Wangsheng Funeral जा नहीं सकता। Parlors. Oh, so they make coffins too. कोई यहाँ जाने के लिए बोल रहा है और मैं यहाँ से जा नहीं सकता बोल रहा है। ये भी सही है। We finally found it. Let's bring this invoice back to Hoishin. ओके व्हाट Don't tell me that's everything. Right now. Oh. Rest and मतलब rebuild. हमको डेन के पीछे पीछे जाना है। ओके आ रहे हैं हम के पीछे पीछे डेन भैया। ओ डेन अब ठीक है। Come to a stream Osa. Hello buddy. एकदम आउट पास तू भी रहेगा क्या भाई? नहीं, मेरे को ही खेलना पड़ेगा इसको। हाँ क्लाइम अप अच्छा होगा। आराम से। Bro, I'm from India. Oh, Ms. Ganyu, I hope. I promise to help. Look. Agreed. Isn't it Racing from the UI Pavilion? I told you that all of my transactions are included in the records. My tax declarations are scrupulous as well. I do hope that my business won't be affected by any groundless accusations. Groundless accusations? Mr. Dongsheng, you seem very sure of yourself, but I sincerely advise that you cease this behavior immediately. It is liable to affect the fine you'll need to pay in the end. No. I'm an honest merchant. I would never get involved with any fraudulent sources of profit. Haven't I made myself clear?
Mr. Dongsheng, you've already been proven guilty of tax evasion. I just came here to see if you'd confess. What? Proven guilty? He's talking without rhyme or reason. Must be crumbling. Time for the finishing blow. Mr. Dongsheng, can you tell me what this is? It's an invoice from Fanmu Carpenters. I'm Master... Do you admit to tax evasion? This transaction was absent from the tax record. I didn't think you'd find out. I didn't leave a single trace. Indeed. We wouldn't have found out if it weren't for Mr. Boalai's aid. Balai? That imp from Wanyo Boutique? So he told on me behind my back. He's got his own share of dirty laundry. Oh? Mr. Dongsheng, I'd like to hear a little more about this I don't think you'll need my guidance for what comes next. अरे यार That's good. I must say, you're truly impressive, Ms. Ganyu. Your enemy knows you best. To think, you came up with this... my father? Pitting your opponent against their enemy, that's how Uncle I figured that as so I decided... I'm really... Ganyu sold. No. That's not... Then let... Alright, come on, Ganyu. Just say yes. Let's eat. If it's just a meal... Actually, I've already... ओके सो अब ये लोग हमारे पीछे नहीं पड़ने वाले हैं तो Miss Ganyu. That's so kind of... Oh? लेकिन जाना कहाँ है If there's anything I can help... Oh, no, With pleasure. Even though I've only decided... I didn't know that you think so highly of me. However, I can't compare myself to such an outstanding secretary like you. I often doubt myself as a result. I disagree. Over the years, I became a mother to... Huh? So Uncle Tian is a grandpa. Influenced by my youthful ideals, she followed my footsteps. At first, I was worried about her. It's not an easy job, after all. To tell the truth, I'm still unsure if she's capable enough. But Upside down waypoint, बहुत बढ़िया. Made up my mind to support her choice. So, what made you change your mind? The fact that you'll help her. It'd be such a beautiful... If it's not too much to ask. Upside down नहीं है. अब यहाँ से कहाँ जाना है? It's true that I've witnessed thousands, but ओए सीली कहाँ गई? ओए you've made me they rely on... Of course. Hooray!
Even if I won't let you down. Regardless, I'm afraid that no time to waste. Let's get back to work. Good luck, Miss. यहाँ से कहाँ जाना है? नीचे? ऊपर जाना था, सॉरी, हमने गलत कर दिया। म्यूजिक इतनी सैड क्यों है यार? सीरियसली इतनी सैड म्यूजिक क्यों दी है यार इसको? Baisha, are you okay? Did you fall asleep standing up? Look who's back. Oh nahi, oh Do nahi. you even have enough time for leisure? It seems you three are a suitable replacement for me after all. Not at all. जाना पड़ेगा वहाँ से इतना घूम के. We've been working for too long. We wouldn't have survived long enough to see you again, Miss Ascanio. We've missed. That's so... We've been praying day and night for you to return and take over your duties again. To us, you're like an adeptus coming down to the human world to save all life. Forget all our envious complaints from before. Just free us from this strenuous work. All right. Please divide the matters at hand into government affairs, business affairs, and civil affairs. Mark out the tasks that haven't been started, and those that are in progress. I'll take care of the rest. Of course. Oh, finally. Yes. I'd like to earnestly thank you, Traveler. If it weren't for your... I'd like to repay you when I'm done with the work at hand. Sure, but are you... Let's cross that bridge when we come to it, shall... भाई इतनी सैड स्टोरी, सैड म्यूजिक, भाई बहुत ज्यादा सैड म्यूजिक बज रही है यहाँ. ना रिमाइंडर टाइप का आता है ना. हाँ काइंड ऑफ रिमाइंडर है आगे की स्टोरी का. उल्टा वाटर पूल है वो.
मैडम कैन यू प्लीज, मैंने स्ट्रीम पे वो जो डेटिंग वाला आया ना उसको हटा दो, मेरे स्ट्रीम पे है। अरे मेरे है ना, हम्म, आईडी कर दिया। से आवाज आ गई। मैंने नहीं। एन बैटल। इलीचल, इलीचल है ना, इलीचल, इलीचल। अब इनके लिए बहुत बुरा लग रहा भाई मेरे को अभी, ये लोग क्या कर्स्ड है, क्या हो रहा है भाई इनके साथ में। तो इसमें भी खाने का सोच रहा है।
डायमंड कौन? ये क्या है? ये क्या है? किसी ने फ्लावर रखा है वहां पे? Have a taste of this! Emerge. Right now. Hold the line! Shine down! Ha! Emerge. Right now. Well, what do we have here? Oh. 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 सेकंड टाइम बोली इसने. सेकंड टाइम कुछ बोली इसने. इसका मतलब पास खुल गया. का भाई एथर था यहाँ पे.
अच्छा याद आ गया, इसने अपने को 3 क्वेश्चन पूछा था वो। हाँ अब याद आया ये बंदे के बारे में, मैं वही बोल रहा था यार इस बंदे को कहाँ देखा है। और उस वक्त अपन ने आंसर नहीं दे पाए थे, दिए थे लेकिन उसको जो चाहिए था वो आंसर नहीं था, वो उसने बोला भी था। उससे लड़ना पड़ेगा अभी। इसको हमें मारना है। डेंस लैब बात करके चले गया अभी इस हेरल्ड को। अभी एलिमेंट रिवील नहीं। हाँ भाई लेकिन कुछ तो डार्क है, कोई डार्क वाला एलिमेंट मिलना आना चाहिए यार। टीसीजी कर खेलोगे। ओ भाई ओ भाई ओ भाई
हेलो पेलर भाई हेलो हेलो पेरिल भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। रियल भाई आ गए। पेरियल, अबे ऊपर कैसे जाओ वापस? अच्छा इधर से चलेंगे। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओके 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 ओके, ठीक है। क्या हो रहा है इनको? बहुत लेट हो, अरे कोई नहीं ब्रो। क्या हो रहा है इनको? बहुत डार्क चीज है, क्वालिटी का पूरा देखो आप, बहुत डार्क चीज है। ये बस पूरा कटसीन है। इनका आवाज कैसा कम हो गया भाई? टेक हिम आउट एंड डीएक्टिवेट। तो तू क्या कर रहा है? ओ, अबे अबे जाओ क्या इसके पास में? मारो क्या मैं इसका? और भाई भाई 3 2 1 आओ 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 आओ। ओके, टाइम फॉर क्या? मेरा ये हुआ नहीं है अभी तक के, व्हाट द हेल यार। ये क्या था? अबे इसको लग क्यों नहीं रहा है? हेलो, अरे यार भाई, गलत है यार ये खंबे के आर पार भी मारता है। हाँ ना यार। ओ भाई
ओ भाई थोड़ा सा ही बचा ही है। आई गेस ये खत्म है अभी। खत्म। भाई क्या मारे आपने, मजा आ गया। अबे आधे से ज्यादा तो इसने मेरी फोड़ दिया था भाई। अरे यार ये अबे तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, कर रहे भाई सब। इसमें भी आ रहे बीच में बे, इसमें भी बीच में आना है इनको। अब इस मैच को, अच्छा ये तो अभी ही है ना, बराबर है, ये तो आएंगे ही ना। क्या बोल रहा हूँ मैं भी, इनके लिए थोड़ी ना कर रहे। बराबर है, ये तो आएंगे बीच में। Well, what do ओके, we have एक टूट गया, एक टूट गया, एक टूट गया। 3 to go। हम बचाएंगे, हम बचाएंगे, हम बचाएंगे, इन लोगों को बचाएंगे हम। और Most humans could have the entirety of their fleeting lives chronicled in but a few short lines. That's close enough. Work. Come on out. अरे बाबा कर रहा हूँ, पायमन चिल्ला मत, चिल्लाते रहती है। Propagate! Illusion shattered! Right here, हाँ? right now, तुम्हारे right इधर here. से आवाज आ रही है ना? I'm always watching. Emerge. क्या जुगाड़ लगाऊं? Show them. क्या आवाज आए आ क्यों? बीच में नहीं आ रही थी ना? नहीं अभी बीच में नहीं आ रही थी। कुछ भी आ रही? अब तो मैं खुद कॉम्बैट में हूँ तो मुझे उधर की आ रही है, मेरे इधर। Where do you think you're going? I'll be back. Where do you think you're going? Scatter! Come on out. एक और एक Right बचा हुआ, now. लास्ट Emerge. अबे Don't tell me that's everything.
आउची क्या बोली इसने अभी? आउची बोली ना? अरे टाइम लगेगा तुमको, मेरा हो ही गया ही है, मतलब ऑलमोस्ट। अबे लेकिन जाएंगे कैसे? हेलो, ये वाला वापस लेंगे? बहुत है, 3 हो गए थे। नीचे नीचे गिर गया ना। Personally, मैं I नीचे गिर think the गया, idea of things staying the same forever is quite beautiful. यही है ना जगह? हाँ यही तो है। But alas, that is simply not the way the world works. ओ भाई, हम आ गए, हम आ गए, हम आ गए, हम आ गए, आ गए, आ गए बचाने के लिए। आउची, मेरे को आवाज आई भाई आउची करके। He is alive. वो जिंदा है। ओ तेरी, ये रियल है ना? Traveling to other worlds is all that anyone seems to be writing about these days. Goodness knows what they find so disappointing about their own world. घूमने चले जा। हेलो ब्रो, वेलकम टू स्ट्रीम। तेरा स्कारा रिव्यू कर दोगे? बिल्कुल, वेलकम टू द राइट। बताना ब्रो।
एजे गेम बढ़ा देना, हेडफोन में कम है। क्या बढ़ा देना? गेम बढ़ा देना, आवाज बढ़ा देना गेम की। स्ट्रीम ओए कंप्लीट, हाँ कंप्लीट हो गया रे भाई। अब तो जाना पड़ेगा बाहर। ल्यूए पे जाओ। भाई डज नॉट अरे भाई यू देर, आवाज चेक करना गेम की आवाज कैसी है, क्योंकि गेम की आवाज मैंने कम करके रखा हूँ। इसमें बहुत सारी म्यूजिक है, बहुत सारी डायलॉग्स है, इसलिए ना मैंने इसकी लिटरली आवाज कम करके रखा हूँ, ठीक है। अच्छा। Most humans could have the entirety of their fleeting lives chronicled in but a few short lines. Their जब तक के stories वेनम really make for terribly उनके dull reading. सब्सक्राइबर का मैं अकाउंट सोचू चेक यार, करते हैं, आईडी चेक करते हैं, तब तक के अपन थोड़ा सा इधर उधर घूम के आ जाता है। वही सोचू कि 7 से चालू हो रहा है, पिछले में सारा 8 से चालू होते, 7 कहाँ से आ गया? अब अच्छा है, चलो ठीक है, ओके नाइस। Traveling to other worlds is all that anyone seems to be writing about these days. Found Goodness knows what they find so disappointing about their own world. टीपी करता। ये तो बैटल पास के है ना? पास के नहीं वो वेपन्स दिखाया बैटल पास के है। ये है बैटल पास इसका। लेवल 10 पे एक पुल मिलेगा अपने को एक्वा, लेवल 20 पे एक्वा, लेवल 30 पे एक्वा, लेवल 40 पे एक्वा, लेवल 50 पे एक एक्वा। साला एक्वा ही मिलता है। लेवल 50 पे 680 प्रीमोस मिलते हैं वेनम। हाँ बैटल पास हो हाँ बैटल पास वो तो मैक्स एच स्कैरामुच की 14 के अटैक है, 1.6 डिफेंस, वाओ स्कैरामुच मिल भी गया। क्रिट रेट नाइस 65%, क्रिट डैमेज 221। क्या ब्रो, वेपन को बोलूंगा ब्रो 90 कर लो, अटैक कम है। Personally, I think the idea of things staying the same forever is quite beautiful. हाँ दिख रहा है, Ah, बस but 2 alas, है। that is simply not the way the world works. क्रिट है 3% क्रिट रेट है, बहुत बढ़िया ब्रो। 3 सर, एक में आएगा एनिमो डैमेज बोन, मैं नाम लगाऊंगा, कराएगा क्या उसका? हाँ डैमेज तो डेफिनेट, बट आप उल्टे उसको लेके
तभी डैमेज दे हाँ। एक और चीज दिक्कत है कि आपको जैसे आप उसका यूज कर रहे हो एलिमेंटल स्किल, फिर अल्ट गायब। अल्ट भी बहुत बढ़िया है। वैनम को जुकाम है क्या? हाँ भाई, आवाज से लग ही रहा है। खांसी तो अपने को भी है यार, आपकी आवाज सब ठीक है, अच्छे से सुन पा रहा हूँ। यार Most humans could have the entirety of their fleeting lives chronicled in but a अगर few आप शेवनमा short फार्म कर रहे हो lines. ब्रो, साइड Their बाय साइड कोई stories और भी really आर्टिफैक्ट make for फार्म करो terribly dull शेवनमा reading. करने के बाद। ऐसा ना हो कि शेवनमा करने के बाद डिसअपॉइंटमेंट आ जाए। तो सर्दी हुई है या ऐसा ही कुछ, ऐसा ही ऐसा ही कुछ दिख रहा है वो। दिख रहा है? हाँ, तुम्हारी फोटो भेजा है इसने। है? पैरल भाई ने तुम्हारी फोटो भेजा है। फोटो? हाँ। पैरल भाई के पास? ए, कैज़म में मेरा एक्सप्लोरेशन 39% ही क्यों दिखा रहा है? हेलो? यहाँ 79, अंदर में 79 है। डोमेन भी करना पड़ेगा। टू डोमेन तो इसके लिए बना है यार, बहुत बढ़िया है। नए वाला डोमेन है कहाँ यार? मैं तो ढूंढ रहा हूँ जब से। सैंड्स पे जाओ, आई ऑफ द सैंड्स को एक जगह है। अच्छा, ओके ओके, आई ऑफ द सैंड्स में ना, तो एक ही यहाँ डोमेन पे है। एक आया, हाँ यहाँ एक आया हुआ है, ओपन करना पड़ेगा यार। आप दे सकते हो ये शाओ को। शाओ के लिए भी यूज होगा ना ये तो? हाँ, काम का है, काम में आ सकता है। अटैक स्पीड इंक्रीज करता है। मैं डोमेन और खोल के आता हूँ। आपका जब तक के रिव्यू देते तब तक के मैं वो हाँ डोमेन दे खोल दिया के आता मैंने हूँ। उनका। ईयू ईयू में अटैक कर रहा हूँ। ईयू में अकाउंट है। ईयू में अटैक है क्या? ईयू में अकाउंट डैमेज देते क्या वो? क्या बोल रहे हो भाई? बट आप ये पबजी वाला टीसीजी वाला कर लो, थोड़ा लंबा है बट बहुत मजा आएगा उसको खेलने में। बात एक काम करते नहीं यार, वो सोलो में ही करना पड़ेगा ना, है ना? क्या करे बताओ, पहले पुल्स करे कि क्या? उस कैमरा अच्छा लगा क्या? स्कैरामोज अच्छा लगा यार, कोई ऐसा गलत नहीं है, ठीक ही तो है। आपका ऑलरेडी एक एनिमो वाला है, खतरनाक वाला एनिमो है। वाले से भी बड़ी बात, आपके ए, पास इसको ऑलरेडी करूँ क्या? इसको पे करूँ क्या? आपके पास ऑलरेडी 2 डीपीएस है, 2 डीपीएस है। जो ही मिया किसी भी पार्टी में रखो काम में आएगी। और शाओ ऑलमोस्ट सारी पार्टीज में काम है। कुछ के लिए आपको कुछ और चाहिए होगा, तो आपके पास इलेक्ट्रो कैरेक्टर नहीं है। हाँ हाँ, तो मॉमी के लिए वेट करूँ क्यों? ऐसा बोल रहे हो? सर वो मिल मॉमी के गई, लिए बहुत काम में आएगा। बट फारूजन जो है वो बहुत मतलब खतरनाक। आपके पास सुक्रोस नहीं है ना? सुक्रोज है ना? सुक्रोस है आपके पास? फिर भूल गए क्या? सुक्रोस बीच में खींचती है क्या या दूर फेंकती है? उसका कॉन्स्टेंट कितना है सुक्रोस का? 1 है या C0 है? C0 है मेरा शायद। एक मिनट चेक करने दो। सुक्रोज मेरी सॉरी, हाँ C0 है। Right here. Right now. Emerge. Germinate! Propagate! Hold the line! Right now. Right here. Right now. A sight to behold. अब देखो, अभी भी बहुत सारे कैरेक्टर्स आने वाले हैं।
क्या करना है आप? कैरामूस निकालना है क्योंकि आपका जितना पीटी है और जितने पुल से आपने मेल से क्लेम किया क्या? नहीं, मैं वहां गया ही नहीं अभी तक मेल तो। से क्लेम कर लो पहले, और जितने आपके पास प्रीमियम से आप इजीली निकाल सकते हो उसका, बट 50 है, निकाल सकते हो, कर भी सकते हो। अगर हार गए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपका फिर नेक्स्ट वाला कंफर्म रहेगा, के लिए भी आप फार्म करोगे तो भी अच्छा है। जियो वाला डीपीएस के लिए बिल्ड करना भी इजी है, डिफेंस डिफेंस देते रहो डिफेंस, बट तो का बस एक ही दिक्कत है, छोटा सा बस एक। तो के लिए मतलब वेपन्स तो है, अच्छा खासा डैमेज देना है तो उसका ही वेपन बेस्ट है उसके, उतना डैमेज नहीं निकल। आपके पास 5 स्टार वेपन भी है तो क्या करने वाले उसको? मैं फिलहाल तो डोमेन ओपन करने जा रहा हूँ, लेकिन ये नीचे में है बता रहा है, लेकिन कहाँ है? वो ऊपर है, नीचे दिखा रहा है। आप जा कहाँ से रहे हो? कैरावन रिवाज इन पे से जा रहे देखूंगा। हो या फिर वो आई वाले से जा रहे हो? अच्छा, ये डोमेन ओपन नहीं होगा मेरे से अभी, है ना? आई गेस ऐसे क्यों? मेरे को यहाँ का क्वेस्ट करना पड़ेगा ना? नहीं, कोई क्वेस्ट नहीं है, कभी भी कर सकते हो ओपन। मैप खुल रहा है, हो गया, खुल गया। मैप खुल गया, डोमेन मैन खुल गया। डेजर्ट पवेलियन क्रॉनिकल डीपीसी एनिमो डैमेज बोनस 15%। फ्लावर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। जरूरत नहीं। पेरियल सर है क्या यहाँ पे? पेरियल क्या करे बताओ यार वैनम, यार मेरे को नहीं समझ रहा है यार, देखो यार। नहीं समझ रहा है। आप अपना पीटी चेक कर लो एक बार, एक काम करते हैं। पहले का पीटी चेक कर लो, उसके हिसाब से चूज करो, स्कैरा या फिर लगा दो पुल। आपको इतना चाहिए था ना पहले जब स्टार्टिंग में आया था वो। मेरे प्रीमो जेम्स है 1987 और 20 पुल्स एक्स्ट्रा है भाई। क्या फ्री टू प्ले अकाउंट है, खतरनाक। अपने मेल से भी पीटी क्लेम चेक कर करो लिया। क्या इसकी? हाँ, हिस्ट्री में जाकर चेक कर लो। Beautiful. ओके थोड़ा But डील है, मैं alas, देख रहा हूँ, that बट is simply not the way देखेगा। the world works. मैं डिनर कर रहा हूँ, उसे लेट टाइप क्या इसलिए टाइप नहीं कर। ओके ओके ब्रो, ओके ओके, कोई नहीं कोई नहीं। 55 5 राइट। हाँ। सो सर चूज करो, स्कैरामुच या फिर तो स्कैरामुच। स्कैरामुच कौन सा? 10 लगा दो कौन फिर। सा करूँ यार, कौन सा करूँ? कौन सा करूँ? 5 स्टार वेपन है ना, 5 स्टार वेपन तो है ना अपने पास में। लगा दो इसको 10। इतो पे करूँ पक्का? कर दो सर। डैमेज 10-20 का देगा पर हिट में, बस देगा। 10-20 का डैमेज देगा? हाँ। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ मतलब 1000 का, 10-20 हजार का। ऐसा बोल ना, 10-20 का डैमेज क्या होता है भाई? 10 डैमेज टुचुक।
ओके इतो पे कर रहे अपन, ठीक है? 10 ही करना। 10 ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है? 3 2 1 4 क्या स्टार। सीधे में दिक्कत। आरुजन मिली तो बहुत बढ़िया। क्या मिला? यानफे। एक ही वो भी यानफे मिली? 2 यानफे मिली है। नहीं, मेरे को डर यही लग रहा था कि ये मिलेगी करके। यार नहीं चाहिए ये मेरे को, मैं यूज नहीं करता यार। हट, अब क्या करूं है ना? अब भी पड़े आपके पास 10 पुल और एक्स्ट्रा 10 पुल, तो आखिरी वाले 10 पुल सेव करो। अभी भी 10 पुल है, तो इत तो मैं लक काम नहीं किया। तो अभी पीटी हो चुका है 65 का था ना? हाँ 65, मतलब इस 10 पुल में 5 स्टार पक्का है। करूं फिर? अब सोच लो, इत्तो ने साथ नहीं दिया, किस पे करना है, स्कैरा या इत्तो? स्टिल इतो पे ही करता है कि वेट वेट सर, वेट। एनिमो। मेरे पास 5 स्टार एनिमो है अपने पास में, वो तगड़ा वाला है भाई। शाव रियली तगड़ा है भाई, मैं तो बोलूंगा भाई। एक काम करो, इसे एक बार डिस्कॉर्ड में आता हूँ। ये चीज बहुत डिले दिख रहा है। तो आपने नहीं बोला तब मेरे को दिखा कि आपने पुल किया। ठीक है, शेयर हाँ परमिशन लगा। गाइस आई विल बैक सून। Most humans could have the entirety of their fleeting सब lives लक के chronicled ऊपर in है but a पेरेल few भाई, क्या short बताए, सब lines. लक के ऊपर है, Their सब stories लक अच्छा के गेम है ना, ऊपर है। इसे एक बार क्रॉस terribly करो, dull पहले reading. ट्रायल पे जाओ एक बार। वेस्टर्न जो आया था ना, अभी इत्तो वाल नहीं वेस्टर्न, अभी इत्तो पे जाओ, ट्राई पे जाओ। ये खेल चुका हूँ मैं। के लिए नहीं मैं और के लिए बता रहा कैरेक्टर बिल्ड। हूँ। अभी आपको दिख रहा है इसका डिफेंस कितना है? Personally, I 1983। think the idea of things staying the वेपन same पे जाओ, forever is quite beautiful. इसके वेपन में क्रिट डैमेज है, But ऊपर से alas, that is इसका simply वेपन not the way the world डिफेंस भी इंक्रीज works. करता है। और आपके पास जो 5 स्टार वेपन है वो बेस अटैक इंक्रीज करता है और अटैक परसेंटेज इंक्रीज करता है फिर नीचे में। आर्टिफैक्ट बहुत इजी है, बट टैलेंट्स पे जाओ सर अभी, कि ये इजीली हो जाएगा, बहुत अच्छे मिल जाएंगे आपको ये। सबसे बेस्ट आर्ट, क्योंकि आपके पास डिफेंस चाहिए। अगर खराब भी हो गया आर्टिफैक्ट कोई, आखिरी 2 में क्लिक करो एक बार पहले, हाँ, कर लो एट्रीब्यूट्स। दिख रहा है आपको अटैक का बोनस डिपेंड करेगा डिफेंस के ऊपर। तो आया डिफेंस डैमेज देगा। बेसिकली डिफेंस प्लेयर है ना ये। डिफेंस के ऊपर से ये और इसके साथ आपको गोरो यूज करना पड़ेगा। ये भी Most पीछे से humans could have the ओरोचिमारू जैसा क्यों entirety है? of their fleeting lives chronicled in बहुत but a सारी few नज़मों का एक्ट्रेस short ऐसी है। lines. Their stories really make for terribly dull reading. और इन अदर हैंड अगर मतलब आपके पास 5 स्टार वेपन तो इसका है, और अगर कैरामूज की भी बात करें, आपके पास ये बिट्स देना है जो 3 बिट्स पड़े आपके पास पड़े ना, क्या पढ़े? बिट्स विथ क्रिट डैमेज वाला वेपन। हाँ अगर आपको स्कैरामूज भी मिला उसको भी आप बिल्ड कर सकते हो। इत्तो मिला, इत्तो के लिए भी जा सकते भाई। हो। अभी इत्तो है पुराना वाला 5 स्टार, स्कैरामूज है ब्रांड न्यू 5 स्टार सुमेरु का। और आपका सुमेरु का बस एक ही कैरेक्टर है, 2 कैरेक्टर है, नहीं 3 है सॉरी। हाँ, लायला, ओले और आई गेस वो Traveling to other worlds is all अरे that C3 हो। anyone seems to be writing about these अब days. इसका टैलेंट देखो जरा, Goodness knows what देखो they वो find इंक्रीज so हो गया। disappointing about their own world.
ऑटोमेटिक इंक्रीज होता है। क्या करे वेनम बताओ। Most humans could have the entirety of their fleeting देखो lives chronicled in but एक a बात few बताओ क्या, short lines. काम करते Their हैं अपन stories अपन really जुआ make for खेलते थोड़ा सा। terribly dull reading. स्कैरा पे करते अपन लास्ट, अभी के जो बचे हुए जो 10 पुल है वो कर लेते, फिर उसके बाद में अपने पास में प्रीमोस भी है 1987 और 10 कर सकते हो। और 10 कर सकते हैं अपन, तो वो फिर मॉमी के लिए बचाऊंगा फिर। एक काम करो सर, एक सिंगल पुल करो स्कैरा पे, एक सिंगल पुल करो। 6 पास करो, अब देखो पीटी अपडेट हुआ कि नहीं। एक मिनट, फिर पूरा ही क्रॉस करता हूँ, रुको। यार पे नहीं दिखा रहा ना? नहीं यान पे नहीं दिखा रहा है, देखो अपडेट नहीं हुआ। काम करते हैं। मैं आता हूँ, डोमेन करते हैं कैरा वाला, उसके आपको उसके लिए चाहिए ना कैरा, मिल गया तो स्कैरा को दे देना। अरे ये वाले कर लो सिंगल सिंगल, एक और 5 निकल जाते। और वो आपके पास 500 पड़े हुए हैं। ये 500 Personally, I think the 515 idea पड़े of हुए हैं, things मतलब staying the जैसे ही same forever is quite 24 दिन बाद ये रीसेट beautiful. होगा, जैसे को 5 पुल But मिल जाएंगे। alas, that is simply not the way the world works. आ रहा है आया तो ना, मत करे सर। आ जाओ ना, तो अपन डोमेन कर लेते फिर। डोमेन हाँ सही, कैरा मिला तो उसको दे देना, या फिर सर आप एक बार 50 चल रहे ना, अगर हार गए और फिर का आ गया, योर गेम क्लाइंट इज नॉट अप टू डेट, लॉग इन अगेन। AFK हो गए थे क्या? सिटी ऑफ गोल्ड ही है ना? देखो उस पे लिखा होगा डोमेन पे, दो इसमें 15% एनिमल डैमेज बोनस और बाकी कुछ चार्ज अटैक वगैरह। एनिमो डैमेज बोनस और चार्ज अटैक में अटैक स्पीड विल इंक्रीज बाय 10% while normal charge and plunge attack damage will increase by 40%। प्लंज अटैक भी तो मारता है। सब स्कारामुस से मिले हो ना सर एक बार फास्ट हाँ थोड़ी में? हाँ हाँ मिल चुका है। कोने बचाया था क्या? हम्म। कैरेक्टर्स आपके पास है, आपको बस से कजुआ। पैरल को पूछता हूँ, पैरल कैसी है बताना। कैसी है बताओ, अगर आप अभी स्ट्रीम करो तो। योमिया पूछा मना। और लग रहा था बट ठीक है। हाँ वो पैरल भाई बताएंगे ना अगर है तो स्ट्रीम पे। है अपडेट है। गेम का अपडेट आया, मैं फिर से मैं भी रिस्टार्ट करूँ क्या?
आप जब चालू किया था आपको आया था कुछ 8 MB का? 200 समथिंग MB का अपडेट आया था। जब गेम चालू कर रहे थे? हाँ हो सकता है, क्योंकि नहीं, मैं तो 8 घंटे से खेल रहा हूँ गेम को। सुबह से मेरा चल रहा है मेरा तो। तक बुखार सही हुआ, घंटे गेम खेलने पे। थैनोस आके तो उससे टाइम स्टोन मांग लूंगा। सब कुछ तू रख ले, बस टाइम स्टोन मिले। ये अच्छी लगी पेरल को, पेरल भाई को अच्छी लगी वो। अरे आपने अभी देखा कहाँ है जी, देखा ही क्या है। नहीं 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 नहीं, ये स्ट्रीम पे कोई ये कर देगा, इसलिए रहने दो। ये आ जाएगा ना गेंशिन वाला सही में। वो बोलेगा क्या कर रहे हो, बोलेंगे बंदे लोग। नहीं, वो एक चीज बोलेगा, थोड़ा सा कैमरा और घुमाओ। जी, मेरे को शेने दिखाओ एक बार। फिर शेन्हे, पेरिल भाई बोलेंगे। शेन्हे दिखाते हैं अपन। कैरेक्टर आर्काइव कहाँ गए? शेन्हे 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 शेन्हे। ये तो मॉमी है, ये तो मॉमी है। मॉमी मॉमी, ये रेडिन शोगन। ओह अच्छा। ये अभी तक के भाभी थी, अभी मॉमी हो गई है। ऐसा और कैसे? ये है शेन्हे भाई, ये है। वेट, अगर इसे बोलोगे ना, हाँ, कैमरा अगर आपको मिल गया तो ऐसा हो जाएगा, आपके पास शावा है, मेरे पास रॉन्गली। आपके पास कैमरा मेरे पास। या ओके ओके, हाँ हाँ समझ गया समझ गया। ये स्कारामुच, स्कारामुच, लेकिन छोटा सा बच्चा ही है, मूछ नहीं है इसको। बच्चे ने आरुजन, हाँ यार वो तो है। हम्म, हाँ, मिल गया क्या? यार दोनों ही एनिमो वाले क्यों आए? क्या क्या? एक मिनट, इसका वॉइस एक्ट्रेस कौन है? चांदनी, चांदनी पारेख वॉइस एक्ट्रेस पारुजन का, चांदनी पारेख। ये जो सबसे ज्यादा 4 सिम्ड कैरेक्टर्स है, उसमें आती है यामिको, हिडन शोगन, शेने और येलन। तीनों में करेक्ट कर चुका हूँ, बस शेने का वेट है अभी। भाई सेन करेक्शन है, कंप्लीट। सेन है। शाव का किसने किया है? लायला बेरजिन, बेरजिन्स, लायला बेरजिन्स। लड़की, लड़की ने वॉइस दिया है शाव को। जब हम लोग नारुतो के अंदर, नारुतो को तो आवाज इसने दिया है ना, फीमेल कैरेक्टर, फीमेल वॉइस एक्ट्रेस ने दिया है ना नारुतो को आवाज। नारुतो को भी दी आवाज दिया है, लूफी को भी फीमेल कैरेक्टर ने आवाज दी है।
गोकू को भी हाँ। फीमेल कैरेक्टर ने आवाज दी है। क्या वो पढ़ेगी? क्या वो पढ़ेगी? क्या पढ़ा क्या है? पढ़ेगी? किसको अरे पढ़ाना है? ऑक्टी आ गया ऑनलाइन। क्या वो पढ़ेगी मतलब? गेटिंग ऑल डीपीएस, ये ऑक्टी का 440। आ अब पेरल भाई, अब देखो दूसरी सिम, दूसरी लड़की जिस पे अपन सिम कर सकते हैं। कहाँ गई यार? तुम लोड नहीं हुआ? दूसरी लड़की जिस पे सिम कर सकते हैं अपन। ये क्या नाम है? ये मिको, मिको या है मिको? आपकी स्ट्रीम कुछ सर में आप आ गए, आपने सबके बंद हो गया। मैंने देखा अर्ली वर्जन वाला, मतलब जो क्या वर्जन था ना आने से पहले, इसका अच्छा नहीं था। अरे यार हट। क्या हो गया सर? स्क्रीन देखो। ओ नहीं 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 नहीं, गलत गलत गलत। ओए हेलो मम्मी, हेलो 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 हेलो। चालू करूँ ये वाली? लेवल 90 है। हाँ सर बिल्कुल। एक अरे मिनट, उसके पहले अपने पास कंडेंस है क्या देखना पड़ेगा। वो पढ़ेगी नहीं था, वो क्या वो पटेगी था। एक ही था क्या वो रेलवे के पास भी था ना? वो भी तो खेलते थे, कहाँ गया? कंडेंस आए बे। एक भी कंडेंस नहीं है मेरे पास। सेकंड लास्ट में लास्ट मिलेगा। सेकंड में दिखा था नहीं, सेकंड लास्ट एक में। भी कंडेंस नहीं है भाई, चलो जाके सर बनाना पड़ेगा। अगर अरे यार भाई। आते जाते अपन वो पोर्टेबल वाला नहीं लेके घूम सकते क्या? रेलवे भाई पास है, ये भी है, बोले है मतलब वो रिसेंट खेले है। अ, सुमेरु, सुमेरु वाला खेला है। सुमेरु जब लास्ट आया था। लास्ट ऑनलाइन 31 डेज। अरे भाई तो आप एक बार लॉग मतलब गेम में आ जाओ और 800 फ्री मुझे फ्री में गेम कर लो। हाँ तुम भी पुल कर पाओगे पैरल भाई, आ जाओ तुम भी यार, खेल लो यार थोड़ा सा हमारे साथ। ओके आई एम बैक कंडेंस बना के। लेवल All the world holds 90 dear का है, is but चलेगा a ना? backdrop of constant motion. I stand before it, वो alone and unchanging. इनवाइट सारे तो स्लाइम्स है। ओके सारे स्लाइम्स है ना, तो फिर मैं ये लेता ना। कहाँ गई मेरी योइमिया? डबल रिजेक्ट और इलेक्ट्रो वाले स्लाइम्स आए तो के लिए मे आप हो बी। ना। चलो लेट्स गो। जब अरे 70 मेरी योइमिया के लिए मेरे को वो लेना था यार। अरे what happened? नहीं नहीं, अरे वो क्या नाम है, बारबेरा लेना था। इसको डैमेज ज्यादा बैठता है ना। बारबरा से नहीं नहीं, स्लाइम से या किसी से भी डैमेज ज्यादा बैठता है ना इसको, योइमिया को। पेड़ अलग नहीं दिख रहा है क्या? एक्स्ट्रा मेरे में थोड़ा अलग है डोमेन। हेलो सर।
There's no escape. Right now, right here. Emerge. थोड़ा दूर रहो और करो. Right here. Evil conquering, worthless. Shine down. Right now. Emerge. Right. घर से परमिशन नहीं मिलता. Emerge. Right here. ओके कोई नहीं. Right now. Emerge. मैंने 56 देखा अभी. Illusion ये shattered. 5000 था वो. Now you shall perish. Fireworks! There is no escape. Useless. Emerge. What a nuisance. A sight to behold. Right here. Emerge. Right now. Shine down. ये क्या डायनासोर है क्या ये? There is no escape. Right here. Right now. Right here. भाई मेरा शाव गया. Right now. Illusion shattered. फाइव पे गया ना अभी मेरा. 5 पे जा रहा है ना. हाँ. 5 भी नहीं मर रहे. कितना HP? गेम करे फिनिश कर. मोबाइल बहुत हीट होता है. मोबाइल पे क्यों खेलते हो? मोबाइल पे खेला भी मत करो. मोबाइल बहुत हीट करता है पता है यार. इसलिए तो मैं भी अवॉइड करता हूँ मोबाइल पे खेलना. अरे भाई क्या आर्टिफैक्ट मिला है. डेंड्रो डैमेज बोनस मिला है मेरे को. तो क्रिट डैमेज वाला मिला है एक. कौन सा वाला है? सफेद वाला या फिर पर्पल वाला? क्या डैमेज कौन सा? क्या सफेद वाला? आर्टिफैक्ट मतलब दो टाइप का आर्टिफैक्ट. पर्पल हीटर करते. पर्पल और गोल्ड है ये एक्चुअली. बैकग्राउंड गोल्ड. स्ट्रीम चेक कर लो 2 मिनट के लिए. फोन से देख लो यार. ये फोन से ही देख रहा हूँ मैं. क्रिट डैमेज है एक्चुअली उस पर. हाँ देख ले. अगर इसमें क्रिटर आया लेवल 4 करने के बाद तो बढ़िया. आपको चाहिए वो जो सामने जो व्हाइट वाला मिला है ना आपको वो उसकी. उसमें एनिमो बोनस आया है. एनिमो आया है? एनिमो बोलता सॉरी डेंड्रो आया है. सॉरी तो वो कोरी को दे देना. हाँ उसको दे दूं? अरे नहीं उधर मत जाओ मैं हील कर दूं. जाके आ गया भाई. अभी मत करो उसको. तो जाके आ तकलीफ गया? मत दो उसको. जाके वापस भी आ गया मैं. हील होके वापस भी आ गया मैं. आपको स्ट्रीम पे देख वो चालू कर लो सर. हाँ इसको हील करने की जरूरत है योइमिया को. जाके आओ क्या? आप चालू कर लो मैं अंदर कर दूं. हीट में हो. अंदर कर लूंगा. रहने दो ना 2 मिनट में आता हूँ ना. सर एक हीट में हील हो. पुल करते हैं बस फरूजन के लिए. नेक्स्ट 10 पुल करूंगा मैं वेपन बैनर पे. वेनम आप कब फेस रिवील करोगे? एजे ने तो कर दिया. ए भाई 20k के बाद. 20k के बाद भाई 20k के बाद. और भाई 2k भी नहीं 20k बोल रहा. स्टार्ट करो.
योएमिया नीचे से कमर तक के ठीक है, कमर के ऊपर छोटू सी बच्ची है। अरे हील कर लिया था ना, वहां क्यों कर लिया? ज्यादा घूमता रहेगा। वो जेलीफिश वहां क्या कर रही है? ये अलिफ लैला वाली म्यूजिक क्यों बज रही है कान में? I'm always watching. Right here. Right now. Worthless. Rebuild. Right here. Right now. A sight to behold. Right here. Emerge. A fist of retreat. Allow me. Right here. Emerge. What a nuisance. What a nuisance. Come on out. Right here. Right now. वही तो 20 के भाई। ठीक है। Emerge. Right now. Nothing lasts forever. Right here. Emerge. Right here. और 12 का दे रहा है, एक डैश में इतना ज़्यादा दे रहा है, एंड पे 13 जा रहा है और ऐसे ही। ये डैश में बहुत प्यारा देता है। Right now. Emerge. और प्यारा। A sight to behold. Show them. Right here. Emerge. Firehead. Right here. Rest and rebuild. डेथ मार्क लगा रहा हूँ। Emerge. Right here. Emerge. डालिया फिनिश। I'm always watching. Right here. अबे उसकी लाइफ वापस आई ना? Right here. आपने ऐसा कुछ देखा क्या? मैंने भी अब वही तो पूछ रहा हूँ, उसकी लाइफ वापस आई ना? जितना डैमेज अपन ने दिया उसको। भाई बच गया मैं अभी वो स्टेज से नीचे गिरने वाला था। लाइफ वापस कैसे आ रही है? अटैक मिला है और फिर से वही वाला क्राउन मिला है, पर्पल वाला, और व्हाइट वाले में अटैक है। चलेगा, दौड़ेगा सर। और सब में डिफेंस भी है, एचपी भी है। दो है बस। एनर्जी रिचार्ज है, डिफेंस है और एचपी है। बहुत बढ़िया। आप लोगों के साथ न्यू पीसी बिल्ड, अरे क्या बात है, ठीक है चलेगा, नेक्स्ट ईयर मैं भी ज्वाइन करेगा, ठीक है ओके ब्रो। लाइव स्ट्रीम वो भी ठीक है चलेगा, करेंगे, कंटिन्यू करो। हालत खराब है दोनों प्लेयर की है मेरे। तगड़ा वाला डीपीएस चाहिए। भाई लाइफ तो फुल हो गई वापस। हाँ हाउ की भी? हाँ Rest, rebuild. Emerge. Right here. Time for Emerge. election. Right here. Emerge. Disappear. A sight to behold. Right here. What a nuisance.
always watching. Emerge. Right now. Hold the line. Right here. Right now. Right here. Let's move out. Allow me. Right now. Ship down. Emerge. Time for a light show. Sight to behold. Right now. भाई वो स्टेज के कोने में मत जाओ, वापस आओ। रुक कर ना। चल ना डबल से गिरो। Rest and rebuild. Fire hazard. Right now. Emerge. Right now. Nothing lasts forever. इसे मैंने 3 हिट मारे। Right here. 14 के बाद भी 14 क्या? Right here. Evil conquering. Allow me. 13 Right now. 14 अबे इधर कहाँ जा रहे हैं? अरे हाँ उधर जाना नहीं। दोनों सी है ना? हाँ दोनों तरफ का एक जैसा है ना, इसीलिए वापस जा रहे थे। क्या डोबाई करके बाहर चलते भाई क्या हो गया अरे ओ भाई ओ भाई ओ भाई। ओके, वाइट वाला मिला है जिसमें अटैक है और सब बताओ, क्रिट रेट, एनिमल एलिमेंटल मास्टरी और क्रिट डैमेज दोनों। क्रिट रेट और क्रिट डैमेज दोनों आया है उसमें। फेदर मिला है ना आपको वो? हाँ, और एक और मिला सफेद, और एक मिला है जिसमें क्रिट रेट है, मेन क्रिट रेट है। बहुत बढ़िया 2 पीस मिल गए। करने से आपके पास एक करे इस पे नहीं, लीव डिमन करो, पीटी चेक करो अपडेट हुआ कि नहीं, फिर पुल मार दो। ओके, स्ट्रीम करो उस पे डिस्कॉर्ड पे। नहीं अभी भी नहीं हुआ, एक मिनट रुको। एक उपाय है सर, गेम क्लोज देन बंद। क्लोज गेम क्लोज देन बंद मतलब क्लोज देन मतलब करके ओपन। आपको थोड़ा स्ट्रीम पर थोड़ा सा बीआर भी लगा रहा हूं। ओके लगा रहे will sooner die again than lay a hand on लगा रहा हूं मैं। माइक ऑन रख लो, बस स्क्रीन को ऑफ कर लो। रिवॉर्ड आप दोनों को मिलता है क्या? डोमेन में बोल सकते हैं, अगर उनके पास में भी कंडेंस हो मेरे पास में भी कंडेंस हो तो दोनों को मिलेगा रिवॉर्ड। स्क्रीन ऑन है। हाँ स्क्रीन ऑन है। नहीं अरे हाँ तो गलत जगह, मैं तो अलग जगह पे ही देखा। ऑफ है ना, ऑफ है। गेम बंद हुआ तो वो भी बंद हो जाएगा ना। बहुत बार रिफ्रेश किया, बहुत बार रिफ्रेश किया, फिर जाके चालू कर रहा। हो जा भाई। हेलो, चालू हो जा, क्या टाइम ले रहा है?
लॉन्च लॉन्च करेंगे गेम को। सॉरी। ओके, आई एम बैक। कब तक? तो स्टार्टिंग में गेम हाँ तो क्या हो गया उससे बीच में? नहीं है, दिक्कत नहीं है। उससे क्या दिक्कत होगी यार, वो पूरा थोड़ी ना था उसमें। हाँ वो भी है। हाँ हाँ आ गया। हो यान गया? पे यान पे आ गया। हाँ अपडेट हो गया। अब देखते हैं फिर से। 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 13? हाँ 13 हो गए ना। 13 तक गए हो आप? उसके पहले 5 स्टार नहीं है बीच में? नहीं अरे ये कैसे? क्योंकि 14th पेज पे योएमी आया है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप खुद देखो। मैं स्ट्रीम पे भी हूँ। 14th पेज पे 13 तक गया हूँ ना। 13 भाई कितने पुल हुए हैं भाई, क्या है ये? तो 65 और 14 पेज पे 67 इस पुल में 5 स्टार गारंटेड है। लगा दो सस्कारा मुझ पे। स्कारामुच मुझ पे, इस पे लगाओ पक्का भाई। लेकिन ये एनिमो फिर से और एक एनिमो मिल जाएगा यार, फिर शाओ बोलेगा यार मेरे को छोड़ दिया अकेला यार। कोई नहीं सर, दो एनिमो होंगे, दो एनिमो डीपीएस और एक पायरो डीपीएस। ओके ठीक है, कर रहा हूँ मैं विश। ठीक है आओ सर। 11 है तो एक कर लूँ क्या पहले, फिर नहीं उसके नहीं, बाद मैं 10 उसको जमा करो, बस 10 ही करो। अगर मिला तो अच्छी बात, वरना बात नहीं करनी। ओके ठीक है। है 4 स्टार फिर? अबे क्या नाटक है स्किप स्किप। भाई, क्या नाटक है फिर से 4 स्टार? कम ऑन लेट्स गो भाई पारजन मिले। लेट्स गो भाई पारजन मिली, ये लेट्स पारजन गो। मिले। अभी जो सिंगल पुल था जो हाँ वो आप कर लो। Most humans could have the entirety of their पारोजन fleeting मिल lives गए, chronicled ये in but a few short lines. सिंगल पुल, single लेट्स गो। Their stories Let's go, sir, let's really go. make for terribly dull reading. यस 5 स्टार। यस 5 स्कारामुच। स्टार। अरे शिट ए भोग मार। क्या भाई क्या करूं मैं? शिट यार।
यार केचिंग क्यों डिलुक आ जाता, डिलुक का वेपन भाई केचिंग क्यों दिया भाई, अब क्या करूं इसका केचिंग कुचिंग का बे क्या है बे। इलेक्ट्रो मेन डीपीएस सर, इलेक्ट्रो कैरेक्टर है आपके पास, इलेक्ट्रो तो नहीं था 5 स्टार, इलेक्ट्रो मिल गया आपको, बस मेन डीपीएस है ये मेन डीपीएस है इलेक्ट्रो की केचिंग भाई कित अब शोगन के लिए पूरा जमाना पड़ेगा फिर से बे, मिला तो क्या मिला बे हट। अगर आपको स्कैरा मिल जाता तो हिस्ट्री बन जाती लगातार 3 50-50 विन का, पहला रहता है 50-50 जिसको आपको टाउ मिल गया था, स्टार्टिंग 50-50 जीते हो, सेकंड में आपको योइमा मिली वो भी आप जीत गए, लगातार 2 जीते हो, लगातार 3 जीतने वाले थे, होते होते रह गया। भाई यार ओह 50-50 कोई हार नहीं, गए, फारूजन मिली है फारूजन भाई, मिली है, फारूजन मिली है बस, All और is well। कुछ नहीं जोन दो। और हाँ 5 स्टार इलेक्ट्रो मिला है अपने को सबसे मेन, Personally, I think the idea 5 of स्टार things इलेक्ट्रो, staying क्योंकि the मेरे same पास में forever is 4 quite स्टार रेजर था beautiful. जिसको सोच रहा था मैं बनाऊं, लेकिन But अभी 5 alas, स्टार that is मिली है simply ये। not the way the world works. अबे लेकिन इसको अब वेपन भी देना पड़ेगा फारूजन को, केचिंग को। चिंग के लिए स्वॉर्ड देना है आपको, बस स्वॉर्ड मिल जाएगा भाई अभी अपने पास में नहीं है ना, अभी अपने पास में लैंड रोर है। हाँ लैंड रोड ही दे दो देखो वही उसके लिए है एक्चुअली, लैंड रोड उसके लिए है, क्या बात कर रहे लैंड उसके हो क्या पैसिव पढ़ो, increase damage बेन ऑफ against आयरन थंडर, increase damage against opponent affected by pyro and electro, बस इसको आर्टिफैक्ट देना। एंड व्हाट अबाउट हर फारूजन को आप स्ट्रिंगलेस दो, Traveling to other worlds is all that anyone seems to be writing about these days. वेपन में उसको स्ट्रिंगलेस दो, या फिर Goodness knows what they find so disappointing about their own world. स्ट्रिंगलेस भी बेस्ट रहेगा। वॉर्बो है मेरे पास, ए पवोनियस वॉर्बो यूज किया है इसने। हाँ बट इसमें वो पवोनियस वॉर्बो अगर पूरा बस बर्स्ट सपोर्ट चाहिए बस, बट इसका एलिमेंटल स्किल भी कमाल है, और जितना ज़्यादा रहेगा इसका एलिमेंटल मास्टरी उतना बेटर है। अपना जो अपन ट्राई करते हैं ना उसमें पवोनियस वॉर्बो ही यूज कर रही है ये। पवोनियस वॉर्बो ही दिया था, जब मैं जो येलन को ट्राई किया था ना, येलन के साथ भी पवोनियस वॉर्बो ही था। तो स्ट्रिंगलेस दूं क्या इसको फिर? लेट्स दो, आप देख लेना, अब ऐसा सपोर्ट यूज करना ना कितना इफेक्टिव जा रहा है, स्ट्रिंगलेस जा रहा है या वॉर्बो जा रहा है। But alas, that is simply not the way the world works. अब आर्टिफैक्ट इसको देंगे या उसको देंगे भाई? नहीं इसको तो वो आर्टिफैक्ट देने की जरूरत ही नहीं है, इसको या तो वीवी या फिर 4 पीस नोबल, बस फेदर, शाओ का फेदर, अटैक नहीं, क्रिट रेट वाला कहाँ गया बे? नहीं अटैक वाला ही मिला था इसमें, ओके ये है क्रिट रेट वाला, अटैक है, क्रिट रेट है और क्रिट डैमेज है, दोनों है इसमें। फेदर अभी चेंज मत करना, आखिरी वाले पे जाओ, आखिरी वाला ये क्रिट डैमेज मिला था ना, क्रिट रेट है, क्रिट डैमेज भी है, क्रिट रेट और क्रिट डैमेज दोनों है इसमें। क्रिट रेट वाला है उसको लेवल 4 तक करके देखो क्या आता है चाल। अभी मेरे पास में क्रिट रेट वाला है जिसमें एनर्जी रिचार्ज, अटैक, डिफेंस और मतलब 2 बार अटैक आया है। इसमें क्रिट रेट भी है, क्रिट डैमेज भी है जो नया वाला मिला, तो इसको 4 करके देखता है। अच्छा वेनम वो मैं कब सीखूंगा, कौन से कैरेक्टर में कौन सा वेपन और फेदर? भाई वो अभी भी मेरे को भी नहीं आता पता है पैरेल भाई, मैं तो वेनम से पूछ के करता हूँ, मैं स्क्रीन दिखा देता हूँ, वेनम करके देता है भाई। अभी भी देखो ना, अभी वो देख के बता रहा है मेरे को कैसा हो, मेरे को भी नहीं आता। आप इससे एक बार स्क्रीन शेयर कर दो, स्ट्रीम में ही रहे थोड़ा। क्रिटर वाला कर, क्रिट डैमेज भी है।
हाँ क्रिट डैमेज भी है इसमें। Most humans could have the entirety of their fleeting lives chronicled in but a few short lines. Their stories really make for terribly dull reading. अटैक आया ना, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस ये अगर तो 8 करो जो। ओह क्रिट डैमेज पूरा बढ़ा। पूरा अभी पूरा 12 हो 16 हो, पूरा कर लो। एक बार गया ना क्रिट मैच, बस बहुत बढ़ चुका है। अगर एक और बार गया तो अलग पीस हो जाएगा, ये बहुत खतरनाक पीस होने वाला है। यार अटैक बढ़। यही नहीं जाना था, बस फ्लैट अटैक गया। कोई नहीं, 16 करो सर। ये फिर भी बढ़िया, फिर भी स्टिल बढ़िया ही है। क्रिट डैमेज, क्रिट डैमेज, डैमेज, क्रिट Traveling डैमेज, to other क्रिट डैमेज, worlds is क्रिट all that डैमेज, anyone क्रिट seems डैमेज, to be क्रिट thinking डैमेज। about these days. क्रिट डैमेज पे गया। यस। Goodness knows what they 20 find so सर। disappointing पूरा about their 20, 18 own पे कुछ नहीं होता, world. पूरा 20 कर लो। अभी अगर क्रिट डैमेज पे गया बढ़िया, अगर नहीं भी गया फिर भी चलेगा, ऑलरेडी डिसेंट अमाउंट में क्रिट डैमेज आ चुके हैं इसमें। और अगर ये क्रिट डैमेज गया इस बार तो तगड़ा, बहुत तगड़ा पीस होने वाला है। कुछ भी नहीं किया। इस पे आता है। अच्छा 20 पे 4 जाता पे अगर 4 रहते हैं तो अपग्रेड होता है, यहाँ पे नया आता है। 8 पे अपग्रेड होता है, 12 पे होता है, 16 पे होता है, 20 पे। है। अबे ये जा रहा है। उस टाइम ना चला लेता है कोई भी। रीस्टार पूरा कंप्लीट हो गया क्या? ओ भाई किया ना आपने इसको। ये दे दूं क्या? नहीं हाँ ये क्रिकेट नहीं नहीं, वाला है। 4 स्टार है, दे दो। दे दो 4 स्टार में। क्रिट डैमेज, क्रिट डैमेज क्या गया? अरे यार डिफेंस है। कोई नहीं, स्टिल स्टिल बहुत बढ़िया। बैक करो। शाओ का आपका कौन सा पीस था? ये वाला वो दो सर। 12 पे 18.5। इसके स्टैट और सब स्टैट। Most humans could have the entirety of their fleeting lives अभी बैक करो और chronicled in शाओ but का a पूरा few एट्रीब्यूट short देखो। lines. Their stories really make for terribly dull reading. 150 to 67। अब वो हो गया शाओ बिल्ड। थोड़ा सा क्रिट 150 to डैमेज 67। शाओ बिल्ड हो गया। भाई 150 टू एक लगाने से, एक आर्टिफैक्ट लगाने से। एक आर्टिफैक्ट अभी बैक करो एक बार। आर्टिफैक्ट पे और एक आर्टिफैक्ट मिला था अपने को। नहीं, सारे 5 स्टार हो गया ना। अब सारे आर्टिफैक्ट चेक कर लो आपके। सारे 5 स्टार हो गए। नहीं मतलब लेवल अप के हिसाब से फेदर बढ़िया है। Personally, फ्लावर में I think the idea of things staying the फ्लावर same भी सही है। forever is quite के बाद beautiful. Ah, but alas, that is simply not the way the world works. क्या आता है डिफेंस के बाद वाले पे? इसमें है एक नहीं 4 स्टार है। छोड़ो। इधर चाहिए और 8।
ये मत देना। अगर ये दोगे तो 2 पीस हो जाएगा। अब अभी सर आपको डिसाइड करना है कि इसके 4 पीस दोगे या फिर 2 पीस करोगे। 4 पीस करेंगे ना, देखो मिल अगर रहा है तो भाई, और क्या। 2 पीस करोगे तो सर Most humans could have the 15% entirety of their fleeting अटैक lives बढ़ेगा, chronicled in 18% but a और few 15% short एमोड डैमेज बोनस lines. Their stories really make for terribly dull reading. भाई एनिमो डैमेज बोनस अपना 38.7 है और उसमें 15 होगा ना। करने जाओगे तो ये हटाना पड़ेगा। हाँ, फिर ये हटाना पड़ेगा। फिर अगर ये हटा दिए तो फिर सर ये रख भी सकते हो, लेकिन 15% रहेगा। इसके बाद में जो है ना, इस वैरायटी पे देखो, घड़ी 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 ये उतना अच्छा नहीं है ना। इधर अगर कोई अच्छा मिल गया, अगर आपने वाले का दे दिया मतलब हाँ, कोई डैमेज, अभी आपका 2 पीस है बस पर मिलियन, इस पे आपका 14-20 जा रहा है और 10 लेवल 7 है। 8 होगा इसलिए डैमेज मिलेगा। ये बर्ड प्लग चाहिए। चाइल्ड को मारना। कहाँ गई यार वो? ये रही। अब कर लो। सर मे बी पिचिंग नहीं, माइनस माइनस नहीं नहीं, कैंसिल 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 कैंसिल, माइनस कंफर्म करो, वही करो, 17 तक करो। Traveling to other worlds is all that anyone seems to be writing about these अभी वो days. सफेद वाइड स्टार्टिंग वाला Goodness knows what they find so disappointing about their own इसमें भी world. 825 आ रहा है एक्स्ट्रा, इतना चला गया। सेंड कर लो क्या कि कौन सा, अच्छा ये अटैक परसेंट। अभी 40 से कर सकते हैं आप, कर लो इसको। 40 से जाएगा। नहीं तुमने बोले 40 तक कर लो मैक्स करके। मतलब वो 40 जैसे ही आएगा ना, जो मैक्स दिखा रहा है, एक कम करना, उसके लिए एक बॉस को मारना। अच्छा अब आते हैं इसके आर्टिफैक्ट्स में, जिसका डैमेज मेनली बढ़ेगा। क्या दिया आज? हाँ उस पे जाओ, पड़ा है वही जो आपने पहले चूज किया। ये पहले कौन सा पकड़ा था आपने? इसके पहले कोई नहीं, वही तो, यही वाला। इसके बगल वाला दिखा ना, मतलब वही सेम वाला। सेम है। आप शांगलिंग यूज करते हो क्या? शांगलिंग पैरेलल इसमें ये वाली नहीं। शांगलिंग को लेके जाते हैं ना पैरेलल इसमें। हाँ वेट, अब 2 टीम करना पड़ता है ना। फर्स्ट टीम में आपका रहता है हाँ शाओ हाँ। और Most humans could have the entirety of their मैंने fleeting शाओ lives की टीम पे रखा chronicled था, in but शाओ a के few साथ में short डेंड्रो रखा lines. था अपनी वो, Their stories really और make for terribly dull reading. बारबेरा रखा था। और सेकंड वाले इसमें 4 रखते हैं, पता है ना, शाओ हो गया। हाँ, तो एक बार इसको लेके गया था मैं उसी में। उसी में उसको हाँ रखना, डेंडो को हटा देना उधर से। ठीक डेंडो को उसके साथ रखना। है। योइमी के साथ पहले वाले इस पे। ये हो गई ना 40 तक। बैक करो जी। तो कैशिंग को आर्टिफैक्ट नहीं दे रहा। कैशिंग को ले लो। कैशिंग को सब डीपीएस बिल्ड करो। तब इसका बस अल्टीमेट यूज करना, बहुत जल्दी आता है। माइनस 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 18 तक कर। अभी नहीं, अभी वही वाला कर लो जी, वही
3 स्टार है ना? Traveling अभी to वाइट other वाला worlds is all that anyone seems to अब be जितना writing ज़्यादा about कम these days. XP Goodness knows what they find so disappointing about their हाँ किशिंग की 5 एक own स्टार सही वाले बात है, पूरे ये जाती है क्रिट डैमेज पे। When your heart is set on something, get closer to your goal with each ठीक है, जैसे आप इसको एसेंड करोगे का क्रिट डैमेज बढ़ता रहेगा। और मत करो, 20 बहुत है, 25 कर लो तुम। अब इस टाइम पे नहीं, जब 20 पे एसेंड होता है कि पहले रुकना, फिर 20 के बाद सीधा 40 पे होता है, तब रुक जाना, क्योंकि तो 8 पे मैं भी लेवल अप करते वक्त यही उपाय लगाता हूँ। आर्टिफैक्ट डाल दिया। एलिमेंट मास्टरी वाला तो नया वाला मिला ना आपको, एलिमेंट मास्टरी वाला, फिल्टर पे जाओ। Most humans could have the entirety of their fleeting lives chronicled in but a few short lines. सेट बाय Their फिल्टर, stories really make for फ्लावर terribly ऑफ dull लॉस्ट पैराडाइज, reading. पैराडाइज लॉस्ट। तो इसके मिले बस, क्या है उसमें डैमेज है, तो इसका बाद में देख इफेक्ट्स मिल जाए तो। Personally, I think the idea of things staying the same मैं भी forever आपका is से एक quite पड़ा हुआ ओ है। beautiful. भाई अप्स एंड डाउन्स इतने But सारे। alas, that is simply not the way the world works. हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? आपके पास एक करने से पड़ा हुआ है ना। मेरे पास आर्टिफैक्ट बहुत कम है, बॉस को मारना होता है, मारने जाता हूँ तो मर जाता हूँ। तो ब्रो साथ में मारा, मतलब साथ में चला करो ना, साथ में करेंगे तो हो जाता है। मैं भी देखो, मैं भी डोमेन किया हूँ, मेरे जो प्लेयर्स है वो 70-80 के है और मैं 90 के इस पे जाके मार के आया हूँ अभी वेनम के साथ में। तो साथ में खेलेंगे तो वो बेस्ट रहेगा, अपन जाके बॉस को मार सकते हैं आर्टिफैक्ट्स के लिए। क्या कर रहा था मैं? हाँ ये थैनोस का टेक्निक, स्नैप फिंगर 5 स्टार। लिटरली मिल वाओ जाएगा। 5 स्टार। वो 680 हो गए भाई। भाई 680 हो गए, ये भी 1000 हो जाएंगे अभी उनके आधे तक पे। अब मैं भाई मैं अब ये बचाऊंगा, अब ये बचा रहा हूँ मैं। अभी ये तो मॉमी कंफर्म की है, है नेक्स्ट जो जिस पे भी पुल करोगे वही मिलेगा। क्या? जिस पे भी आप 75 पुल तक जाओगे, हाँ वो वाला आपका मिलना ही मिलना है। ये जी बहुत लकी, 50 हार गए डिलुक तो नहीं। हाँ अबे हाँ, चीची नहीं मिले ने तो पता चल रहा है चीची मिलती है हमें। ये ना कैचिंग मिलने की खुशी। हाँ हाँ हाँ, ना चेचिंग मिलने की खुशी, ना डिलुक ना मिलने का गम। आ, मैं आया तो लगता है मैं आया तो मोबाइल से आ पाऊंगा, पीसी से तो उम्मीद कम है। अरे कोई नहीं ना ब्रो, एक काम करना, आप बोल रहे हो ना नेक्स्ट इसमें अपन पीसी बिल्ड करेंगे उसके बाद आया। वैसे इसके लिए ज्यादा तगड़ा पीसी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। इसे भी डिसेंट एक क्वाड कोर प्रोसेसर भी चल जाएगा अगर आपको बस गेम खेलना है।
कोई सा भी ग्राफिक कार्ड मतलब मैं के हर एक में 1050 यही वाला इसमें कर चलेंगे डोमेन पे। चलो एक बार है ना आपका एक कंडेंसर। भाई लेकिन क्या अप्स एंड डाउन्स भाई, कितना अप्स एंड डाउन्स यार हट। अब वो योइमिया तक के पहुंचते तक के मेरे को पूरा फिर से करना पड़ेगा टीटी। हो जाएगा सर। तो इवेंट नहीं आया ना अभी, इवेंट आएगा फिर तो इजीली हो जाएगा। ऐसे खाओ लो और वो लो, बहुत काम में आएगा। उसके पास में एचपी नहीं है। अरे हाँ उसको उसके ऊपर क्लिक करो एक आर्टिफैक्ट बार, भी नहीं दिया अपन उसके ने। ऊपर एक बार क्लिक करो बस। ये देखो डिटेल्स का ऑप्शन आएगा ना, ऐसे क्लिक करो उसके ऊपर जाके फ्लावर में जाओ, आर्टिफैक्ट में जाके कोई सा भी एक फ्लावर दे दो जो लेवल अप है, किसी का भी दे दो खाओ के अलावा, खिला के लिए फिर चेंज कर लेना। किसी का भी दे दूं? हाँ उसका पड़ा है ना देखो लायला का, तो हाँ वाइट लायला का पड़ा हुआ है। लायला का लायला तो यूज कोहली का भी पड़ा हुआ है, लायला का भी पड़ा हुआ है, दोनों का पड़ा हुआ है। ले लो कौन सा। कोहली का है। इसमें एनर्जी रिचार्ज है। हाँ वो दो वही दो वही दो, वही बेस्ट रहेगा। एनर्जी रिचार्ज है इसमें। वही बेस्ट रहेगा इसको वही। Traveling to other worlds is all that anyone seems to be writing about these days. Goodness knows what they find so disappointing about their own world. वह स्टार्ट करने का है ना। चलो अरे चलो को लेना, एनिमीज को गैदर करना। मरी। ओ खत्म। बची क्या बचा भाई। बीच में से की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही कर दूंगा। के भी लेवल और एचपी कम है ना, बस ई दबाना फिर छोड़ देना। There is no escape. Shine down. Now you shall perish. कार्ड नहीं आता क्या? आ गया रुको। Illusion shattered. कभी शाउट और का जब फिर से है उसको मारने से पहले उसका अल्ट मार लेना। मैं जब कर रहा था ना इसका, तब बीच में दिखा मेरे को इसका अल्ट आएगा। हाँ इनको बीच में गैदर करके इसका अल्ट मार रहा है ना, क्या होगा। ओके करूँ क्या? ठीक बच्चे शालो $16,000 कंटिन्यू 16,000 17 16 खत्म हो गया। 14,000 डैश में क्रिट किया भाई, डैश में 14,000 भाई फाड़ दिए भाई डैश में। न्यू सीजन कब आया है? वैसे आज ही आया है ब्रो, आज ही आया है। क्या नहीं
या अरे ओके मैंने गलती से क्लेम कर लिया, नहीं कब आया मैं? डिफेंस डिफेंस आया और पर्पल में एचपी आया। वाइट वाला डिफेंस पे गया 8.7 लीव कर रहा हूँ मैं। डिफेंस पे गया है बे हट। पावर मिल गया। अब पास वो कितने पड़े चांसेस तेरे? मैप खोल के देख। हे छः। काम करो जी, विन हो गया ना आप? ये वाला कलर बहुत छोटा सा है, फटाक से हो जाएगा। हिटलर को मार। भी एक काम करते हैं, अभी हो रहा है 10:30, मैं कर रहा हूँ बंद अरे स्ट्रीम। 10:30 हो गए? हाँ अरे बाप रे, टाइम देखा ही नहीं। मैं कर रहा हूँ स्ट्रीम बंद, खाना खा के आता हूँ फिर देखते हैं। न्यू सीजन आज ही आया था और मेरे पास में बहुत सारे प्रीमोस बचे थे, तो हम सोचे कि कर लेते हैं कुछ अच्छा वाला मिले तो। लेकिन ठीक है, एक अच्छा मिला, एक फारूजन आई गेस 4 स्टार है ना, फारूजन 4 स्टार है, लेकिन अच्छी मिली और केचिंग भी अच्छी है यार, क्योंकि मेरे पास में 5 स्टार इलेक्ट्रो नहीं है, मेरे पास 4 स्टार इलेक्ट्रो है, तो वो मिली है तो ठीक है ना, ओके कोई नहीं। और ऊपर से सबसे भयंकर हमारा शाओ और तगड़ा बन गया भाई। अब किसी को मार के देखता हूँ मैं डैश, अगर फिर से मिल गया उतना भाई तो गजब मजा आएगा। अच्छा यही है क्या यार? क्या कितना देखा ही नहीं यार मैं कितना गया, तो ठीक है ओके कोई नहीं, फिर से देखता है। ये लोग तो है, डैमेज चेक करना है भाई। हेलो ब्रदर, मेरे को डैमेज चेक करना है आपके ऊपर। 12,000 डैश में हाँ डैश में। रेड लाइक Careless. Stabilize. Let's light it up! Thunder! Illusion shattered! Weak! Pathetic! Weak! Illusions of up destructions! बारिश करवा दिया। Gather. Let's light it up! इससे मार। There is no escape! Shattered! Everybody stand back! Inazuma shines eternal! Your verdict is decided. हाँ तो मैं क्या कह रहा था या तो हमको स्कैरामूस तो नहीं मिला, ठीक है ओके, लेकिन फारूजन मिली, बैनर का और एक प्लेयर हमारे पास में आ गया। मैं वाला बैनर का और एक प्लेयर आ गया हमारे पास। तो देखते हैं अब नेक्स्ट के लिए बिल्ड करते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद मैं आता हूँ। अगर बीच में टीआर वाला कौन सा वाला कौन सा वाला इवेंट बोल रहे हो ना? इवेंट नहीं है वो, क्या गेम मोड। हाँ नया गेम मोड जो है उसका छोटा सा एक क्वेस्ट है, वो कंप्लीट कर लेते हैं क्वेस्ट, और उसके बाद में फिर वो भी खेलेंगे क्योंकि उससे भी प्रीमोज मिलते हैं। और या तो दैट्स इट फॉर टुडेस स्ट्रीम। आप लोग स्ट्रीम पसंद आए तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल, और या मैं मिलता हूँ अगले स्ट्रीम में। Then take care. See ya. Good night. Eternity is in my hand!
There is no escape. Now you shall perish. Detached from the world. Teamwork is dreamwork. Illusion shattered. Torn to oblivion. 1,00,000 का डैमेज देने के बाद भी रेडियन बॉल को कोई डैमेज नहीं बैठा. Inferior. I will have order. समझाओ किससे दे रहे हो इतना? हाँ? किससे दे रहे हो? रेडियन को कौन से रेडियन को डैमेज दिया? Obviously electric. The eye sweeps the land. Let's light it up. I'm going in. Shine down. Gather. Strike dead. Solidify. Lightning falls on the land of eternity. Strike dead. I'm here. Crumbles before me. वो मिलके. चलो मैं आता हूँ खाना लेके भाई.
मोबाइल खेलूंगा तो देखो सर, ये गेम भले ही मोबाइल पे है, बट अगर आपके पास गेमिंग फोन मतलब ROG का कोई फोन लगा होता है अलग से, ROG मतलब ROG सीरीज 5 हो गया, अगर वो फोन्स नहीं है तो ये गेम मोबाइल में खेलना बहुत मुश्किल। ऐसा नहीं बोलूँगा कि खराब है गेम, अच्छा प्लेबल नहीं है, प्लेबल है, बट मोबाइल हीटअप होता है, बहुत दिक्कत आती है। मैंने आप इस पे ही खेल रहे थे ना पहले? अभी भी खेलते हो आप इसमें? What is this? Artifact. दिक्कत नहीं आती ब्रो तो 1-2 घंटा खेल लेना, मैं बोलूँगा खेल लेना, ज़्यादा मत खेलना। 1 घंटा या फिर आधा घंटा बंद कर देना, फिर लगातार खेलनी। पूरा स्ट्रीम बड़ी
ये ना ब्रो, रिफाइनमेंट मत देते थे अगर रिफाइन R2 हो। जरा इधर से क्या है, और देता टैग की जगह और बढ़िया। ありがとうございます。 थैंक्स फॉर सब बडी। ओके इधर थोड़ी मेरे लिए अभी तो बस आपको फिलहाल के लिए, जब गेम में आओ फिर से, आपको बस AR45 रीच कर आर्टिफैक्ट्स, पहले आर्टिफैक्ट्स है ना। तो अगर ये आपको बेटर ऑप्शन मिले तो रेट तो चलो सही है, डैमेज बार HP में है और 2 बार ER में, बार HP ये चेंज करने की जरूरत है, ये वाला। बाकी ये वाला तो बहुत बढ़िया है, डैमेज है बहुत बढ़िया है, पीस बहुत, सारे पीस बढ़िया। अगर आप ब्रो ये चेंज कर पाए तो आपका ये चेंज हो जाएगा। बस टारगेट रखो ब्रो, % बढ़ा लो, 5 हो जाए, जितना बढ़ेगा उतना अच्छा है, बट ये टारगेट रखना है। आखिरी वाला डैमेज बहुत बढ़िया, EM फाइनली भी है, ये बिल्ड हो सारे बिल्ड बहुत बढ़िया ब्रो। सही है, अभी काम कर सकते हैं इसके। और अगर आप इसको एग्रीगेट टीम में, रिएक्शन टीम में यूज वाला वेपन का सब आता ही है, तो वाला वेपन भी, ये तो पूरा एटलीस्ट R2 या फिर R3 होना चाहिए तो बहुत काम का है। अगर ये दोगे इसको R5 में तो आपका एनर्जी का रिचार्ज भी जैसे बड़ा हो जाएगा जैसे।
5 स्टार फिर फाइनली और भी 5 स्टार होंगे। ये वाला वेपन ये तो नहीं है क्रिट डैमेज वाला आएगा। आ रही है यार माइक पर ऑडियो लेना बंद कर दे। 'आ ही गया है भाई। है ही नहीं। नाइन 168 जा रहा है। Winner. तो अच्छा टीन का 516 यार इशू है।
Much to keep me occupied, old thought patterns start to creep back in and... दे रहा हूँ देना भी As I start talking about it, backstart. से चलो जो आपने इसको और क्या सर जब आप डिस्कॉर्ड में हो कभी दिखाना आपके पास वेपन इसको दिखा है और बड़ा को फिलहाल के वेपन दिखाना आप जब आओगे 38 है ना ऑलमोस्ट हो जाएगा आप गेम आके कर लो 5 आपको ज्वाइन कर लूंगा साथ में करेंगे पहले डोमेन करने के लिए आपको एक चाहिए ना 5 स्टार इन्वेस्ट करो प्रीमियम सिखा लो और अगर आप डाउनलोड कर रहे हो कल तो इस पे आप मत करना इस पे कर भी सकते हो इसकी भी बट ये न्याय सही है तो मैं बोल इसको ही करना इसको भी कर सकते हो आप दोनों को देखना इधर गेम में आओ इधर आ रहे हैं आपको टेस्ट रन पे कौन सा आपको बेटर लगे तो आप पुल कर लेना 5 स्टार तो कोई ना कोई तो एक 5 स्टार मिल जाएगी आपको बिल्ड कर हमें
Come on, serious suggestions, please. I'm not trying to write a thriller here. It's supposed to be an essay, you understand? An essay! That means facts and logic. फिर से बोलना, स्ट्रीम पे आपकी आवाज ग्लिच है। Well, if it's yeah, well, I want to write. Yes, you came to. Did one of them just mention Tatara Suna? But is it just Paimon or is it kinda unusual for Great! Let's go find out what this Tatara. Feeling alright today. I'll take a chance. Try to get. अर्ली गेम पे तो आप कुछ भी दे दो, सेंसा कुछ बड़ा इंक्रीज करो इसका, सही करना, स्टार्स को ही करना। करना तक इसके सबस्टैंड कैरेक्टर में कैसे डैमेज बढ़ाना है, अटैक तो बढ़ना चाहिए, क्रिट रेट और क्रिट डैमेज बढ़। क्रिटिकल हिट मतलब क्रिटिकल हिट रेट और क्रिटिकल हिट डैमेज, हिट ज़्यादा रहा तो क्रिटिकल हिट पड़ने का चांसेस बढ़ता है। अगर क्रिटिकल हिट हुआ, क्रिटिकल डैमेज मतलब अभी गेम है ना, देखो बस आप गेम में आना, डिस्कॉर्ड में आना एक बार और आपका स्क्रीन शेयर करना मोबाइल, फिर बताना क्या क्या है आपके इनमें। ये नहीं सारे ये वाले 5 स्टार्स, ये आर्टिफैक्ट्स है, ये नहीं देना, मतलब 5 स्टार्स है, जैसे बैकग्राउंड के देना, ये वाले देने।
डैमेज क्या? हिसाब से ये वाला क्या है? 30। But what if Tavad is round? Alright, I guess I'll go with my text. Ugh. If only we knew where to find that traveler. From what they say about him, this seems like the kind of thing he'd know about. Oh, you're the traveler, you say? Hey, what's with that face? Don't believe us? No, of course I believe you. Actually, good- I first good heard night, about your Bill. great exploits when I was still in Inazuma. This is my first time coming face to face with you and your mysterious silver-haired companion. I couldn't believe my luck, and out of force of habit, I started, examining the evidence. Oh, so what? For the love of... Sorry, we don't get out much, so our social skills are kinda lacking. Traveler, I hear you've helped many people a great deal and been to many places. Would you be able to tell us... Actually, we don't know much about that place either. In fact, we only came over here because we heard you talking about it and I see. My teacher chose this area of research as a personal challenge. He said it's difficult to get into because even Inazumans don't know much about Tatarasuna's past. But who'd have thought that... If you don't mind, I'd love to show you all my outline for the book I'm writing. Hold on, Sawada. Don't you think that's a bit of a deep dive for a first... Well, fair point. In that case, please ease yourselves in gently by taking a look at Akaba's latest Let me give you some background. This all started with the discovery of some records in Tatarasuna. The writings mentioned someone by the name of Mikoshi Nagamasa, who crafted a fine blade, but in the end, he threw it into a fire to destroy it, and killed his servant Katsuragi. Why? Well, no one knows. Apart from the swordmaker, his servant, and the one who wrote this all down, the records also mention a kabuki mono. This seems to be an Inazuman word for an eccentric stranger. Someone who dresses funny or acts in... That's right. Akaba's teacher has spent quite some time researching these events on the ground. So first this strange person goes missing, then a murder happens. Yes, my thoughts exactly. Stop shouting! This part's important. I just wanted to make it stand. It just so happens that a friend of mine works at the Government Records Office. He looked into it for me, and I can now confirm that all the aforementioned individuals did, in fact, live in Inazuma over 400 years ago. Even back then, Tatarasuna was already at the center of Inazuma's smelting industry. The man in charge was a government official named Niwa. Curiously enough... Wait, so there are two missing people? That's right! What's more, Niwa is a name with a lot of history to it. Have you ever heard of the great swordsmith clans of Inazuma? Oh, the swordsmiths? Yeah, like Ishin Art. Wow, yes. You really know your stuff. That makes things easier. So, basically, this Niwa was a distant relative of the Kaidahara clan. Something then seems to have happened in the Kaidahara clan, leading to their downfall. I don't know the details, but taken in light of everything else going on around that time... The Kaidahara clan. Sawada, you left out the biggest detail of all. Oh, yes, of course. How could I forget? Brace your minds, ladies and gents, for they are about to be blown. Or maybe you won't believe your ears. Get to the point. According to information acquired by Akaba's teacher,
The Kabuki Mono was not a human, but a puppet? Or called should be the better, but Aha! Judging by the looks. No! Paimon just meant. I agree. It does. Oh, and please read my essay. वही इंसिडेंट का पास दिखा रहा है. Sawada was encouraging me to. Oh, how about if I plug the hole? Wait! You're allowed to just make stuff up? Pretty sure you've gone from essay to guessay there. Akaba, look. Your teacher has researched this extensively. Besides, if there really was a political power struggle going on at anything like the level you seem to be suggesting... Good point. Okay, back to the drawing board. We have some other stuff to do, so we'll... All right, thank you. Hey, so that thing they were talking about, it has to do with the balladeer, doesn't? Okay, then even if we did know something about it, we probably couldn't share it with them, huh? After all, we kicked his butt and got him locked up. Information about people like that is usually super confidential, isn't it? If you ask Paimon, Akaba should just pick a different topic. There must be as many essay topics as there are trees in the forest. There's no point in... Ah! Hey, did you see that? He literally just went by, over there. It looked like... the balladeer! No, it can't have been. He got locked up. Oh, quick, let's catch up and see. Personally, I think the idea of things staying the same forever is quite beautiful. Ah, but alas, that is simply not the way the world works. Traveler, Paimon, there you... Nahida! Bad news! We just saw the... Did he escape or... Sure enough. You're here. Hey! What are you doing in the sanctuary of Surstan? I know you must have a lot of questions. It was my idea to set the balladeer free. We made a deal, and he's gonna do some investigation in Irminsul for me. A deal? What did you expect? Why do you think Sumeru would keep me around otherwise? Or maybe killing me is all you can think about. But if that's the case, why haven't you done it already? Don't flatter yourself. It was... Nahida said there's still some mysteries in you to... Ah, so if it were up to you, you'd finish the job? Guess I had you all wrong. There I was thinking you were just getting cold feet.
Well, that escalated quickly. Not a good start. But Paimon's worried about you, Nahida. It's not every day you see people questioning the God of Wisdom's judgment. Just when you think you've seen it all. Don't you dare try to drive a wedge between us! As long as the terms are reasonable, I don't think there's a problem in making a deal. Well, I, for one, have no reason to doubt you. Considering you even struck a deal with the doctor. Yes, one in which I gained valuable information. The Balladeer's power was all but completely spent after your battle. He's no longer strong enough to be a strategic threat to us. That plus, he's a former Harbinger with knowledge of many of the Fatui's sensitive secrets. Being stuck here in Sumeru could make him a sitting duck, depending on how the Fatui plan to respond. Wait a second. Armor? You mean, he's not— I take no pleasure in saying this, but it seems as if the doctor had no intention of welcoming back a loser, so... Sometimes it's you using them, other times it's them using you. Most human relationships are this way. Certainly all the stable ones are. That's how it was between me and the Fatui, and also between each of the Harbingers. So as long as you have some value to offer, nobody will ever abandon you. But after recent events, even I have to admit that I'm not worth quite what I used to be. Well, if the Fatui are gonna reevaluate my utility, I need to have a backup plan for myself. As we discussed, I don't like causing harm to living beings, and you said you need protection. So... I think these two have made their objection to that idea fairly clear, don't you? And they're your friends, so I guess you'll be siding with them. Yeah, obvious! Then let's put that discussion to the side for now. Today can be a trial run. Where we go from here will depend on how well we manage to cooperate. All right, then I'll do what we agreed. Good. Go now, and keep in touch. Nahida, are you— Yes. यार ये पाइमोन I have my reasons for this decision. In fact, yes. As I told you... Oh, yeah. Actually, that's the whole reason we came to see you today. It's possible that the Fatui, he was granted the power, the amount of information in her, so I asked the Balladeer to search in Irminsul for any... Exactly! Or... I understand. How things will go in the future. Our minds have connected several... As Sumeru's deity, if this deal with the Balladeer can give you the answers you've been longing to find, then it's worth it. It's my pleasure, really. You're Sumeru's hero. Paimon's still worried about this idea. I was going to contact you about that, but then you suddenly showed up on your own accord. Seems like we have a telepathic connect. In fact, I was going to ask you to supervise the Balladeer on my behalf while he carries out the task I assign. Even though he only has a fraction of his full power left, that's still a fraction of a former Harbinger. If you could accompany him, of course I'll be there to help guide you through Irminsul from the outside. Great. Thank you. Prepare yourselves. Wow. It looks pretty different here compared to last time. The colors are gentler. Guess that must be because Sumeru... Look at that. Hot on my heels. You know, you didn't have to cut your catch-up short just to keep me company. Oh, but I guess you panicked when you realized that I might enter Irminsul ahead of you. Shut your beak, jailbird! I understand that prisoners have to put up with harassment from the guards. But right now, I'm on temporary release. So maybe you should think about backing off a little. Sounds like a successful rendezvous. I need to be quite clear about something. In a few moments, unlike anywhere else, Irminsul's inner region consists exclusive. I know there are many grievances between you, on both sides, but it is essential that you remain calm after entry. This is as much for your own safety as anything else. Fine. Let's call it... Let's cut each other a little slack, shall we? We are gonna be traveling. Per my agreement with Lesser Lord Kusanali, I'll be at the front. It's my job to lead the way and get rid of any obstacles in our path. All you have to do
is keep your pretty eyes open and try not to fall behind. You sure are confident. Yo. Paimon will give you that. If there are no further objections, or did you need some time Yo, to hi, Mo. mentally prepare yourselves? क्या सोने जा रहे थे? This guy. यार कॉन्क्वेस्ट कर रहा हूँ ये लोग ट्रैवलर और पाइमॉन बहुत बुरा भला कह रहा मुझको अरे अरे बट अरे मुझे अरे। देखना है जब इनको स्टोरी मालूम चलेगी फिर पाइमॉन क्या और रंग बदलू है, कभी अच्छा बोलता कभी बुरा बोलता, We can पागल है start वो। now. इतना अब ये कर रहा है बस ये पूरा लोनली है उसके पास कोई फ्रेंड नहीं है Darn it! Come on, let's catch up with him. चलो मैं भी कर रहा हूँ आर्कॉनिक, सोने जाएंगे। आप वो टीसी वाला सर हाँ यस वो कर लेता हूँ मैं। क्या नाम है उसका यार? ये बिल्ली कम कैटेल पे जाओ ओके मिल गया। So this is मॉन्स्टेट पे जाना है वापस से। Ermin's soul is closely intertwined with the entirety. Pick your jaws up off बिल्ली the वाले के floor. पास में। Why is it that Paimon just wants to do the opposite of everything he... Lesser Lord Kusanali, we will now... Can you still sense where the heart of Ermin's soul is? Yes. Permission to begin searching for information there? Permission granted. Go ahead. Let's go. Stay close. Don't... Hey, so... Say we did... ये कितनी छोटी छोटी बिल्ली है। I was just imagining the look on your travel companion's face if you went and got lost. Anything's possible in here. You can't rule anything out. So if you want to stay safe, your best option is to... ब्लैक कलर की कैट है भाई यहाँ पर। सही। ओह मस्त है, उसको बोला दिया और कैप पहना दिया। These sapling things have spread out. Those are all packets of information from inside Ermin's soul. Be careful not to touch them. It looks the same in every direction. No wonder he mentioned about getting lost. Huh. What do you know? He was actually telling the truth. Is he mocking me again? What is it this time? There's a time and a place to lie, but this definitely isn't it. So why don't you relax your guard a little? We're here. What a huge... Lesser Lord Kusanali, Good, you made it. ready when you are. Then please begin. Preparing to access cognitive currents. The Balladier's actually doing what Nahida tells him. डियोना The rest is up to you. डियोना डायोना क्या नाम है? डियोना डायोना क्या नाम है भाई इसका? For once, we're the ones with no Traveler, Paimon, would you like to talk? Yes, I've also invited Paimon to... Huh? What the? We can talk to बिल्ली each other inside म्याऊ। our head? That's part... Paimon's never tried this, so... Paimon's been one... As I've told you before, there are still some mysteries for him to resolve. Things that are clear as day to me, but that he has yet to understand. Perhaps today will be the day that he finds some answer. Well done. Smart and attentive as... So, you made contact with that part of his mind. Well, it's true. Betrayal turned the Balladeer into the person he is today. Huh. Paimon thought nothing could get under that guy's skin. Turns out, he can get... Everyone has a history, Paimon.
Even if you're a puppet created by the Electro Archon. Speaking of puppets, we ran into two people at the Akatsuki. If you mean the mysterious events, the Kabuki Mono and so on. Really? Because from what they were saying... Oh? How interesting. Those two managed to... So the Gensei got it right. Well, Venom? they guessed right about one thing. इसके डाइस में भी वो पाइमॉन वाला Must लोगो be a है. riveting कह conversation रहे you three ओमनी are वाला having. एलिमेंट जो Funny how all the good ones एक happen तरफ when से I'm हम not involved. कर रहे कि वो एलिमेंट कोई सा भी एलिमेंट बन सकता है. वही कह रहे हैं ना इधर. हाँ. एलिमेंट बन सकता है. लोगों ने बोला था कि 8th एलिमेंट गेम में आ सकता है कभी भी. आई गेस 8th एलिमेंट आएगा. सर जब लीक किया इन लोगों ने बन सकता है. ट्रैवलर का एलिमेंट ही ओमनी एलिमेंट है. कोई सा ही बनने का. Don't insult me. You're having a private conversation without me. Obviously, I must be the topic of said conversation. Of course you do. You can't have your prisoner knowing too much. So, Still looking. Don't get your hopes up, though. You and your twin come from outside this world. It wouldn't surprise me if there was nothing on either of you in Irminsul at all. Wait! How did you know about that? It's not like we've never met before. And anyway, you're world famous. It'd be more surprising if I didn't know a few things about you. Right now, we have to keep the peace. I'm not interested in creating more misery for myself. And making cordial conversation is something I can manage. Huh? This light. It looks similar. Anonymous data. Hey, don't you forget the agreement. You had... Shh. Just wait. Mr. Niwa, are you certain this is worth the risk? We are talking about Tatara Suna's furnace, after all. It may not pay. There's no one else who can enter the furnace. It has to be me. Is that so? It's... I have been in Tatara Suna for some time now. You have under your leadership. Tatara Suna is a warm, welcoming place. As I understand, the Raiden show the forging industry with crystal marrow as a raw skills, blood, dreams. Every smith brought into... Yes, well, were it not for you coming to Inazuma, you allowed a even now. You You flatter me. So you say, Escher. My good sir, what do you... I tried to resist thinking it was all connected. Because I didn't want to speculate. What have we gained from adopting your new technology? Ominous black smoke? Mounting production problems? Animation And अच्छा है recently, इसका. as none of the people who went out to get help have come Level back. पे जो अपन वो ये करते हैं ना. Now, our mutual... But that Attack, doesn't phase attack. you, does it, Escher? ठीक कुछ बना. I'm just surprised that you finally chose Animation to be अच्छा so बना है. sincere. I'm sure you... Mikoshi Nagamasa may have noticed that there was one common denominator among all these events. After all, Nagamasa is the adopted son of Mikoshi Torachiyo, the yokai struck down by the shogun's own hand. If he truly seeks to redeem his family's honor, an abundance of caution is... You're well informed on the subtleties of his situation for a mechanic all the way from Fontaine. Are you sure you're not a little overqualified? Why, Mr. Niwa, are you suggesting I find a job as a diplomat? Sadly, I am so very attached. Enough, Escher. I'm here because an evil force is raging inside the furnace. And someone needs to take your new device inside the high-risk zone so we can absorb it and put an end to the problem. I'm in charge here. And I'm about to take some responsibility and head inside. Probably to my death. But what about you? What are you still doing here? Judging from the look in your eyes, you don't... Drop the act! We're past that now. Whoever you are, it looks like your plan to destroy Tatara Suna has worked.
I just want to know what you're still doing here. What's left? Don't you have all your answers by now? Honestly, I'm just waiting for the right moment. Oh no. A moment like this, where you finish talking and I stop you from entering the furnace. You... You're a little smarter than I initially gave you credit for. I thought I'd disguised myself exceptionally well. It's a long journey from Inazuma to Fontaine, but that didn't stop them. Eventually, they managed to confirm that Escher was an alias, and that I was not from Fontaine. And yet, despite all of that, you still fail to realize my true identity. If you Oh, but you're quite wrong. There is... Whoever you're working for won't get away with it. It's no trouble at all. Hey, if you must know, I'm happy to divulge my true identity. I'm a Fatui Harbinger. Call me the Doctor. Oh shit. Fatui Harbinger. हैं? ये एक जो मैं आर्कम को जगह इसका नाम है इनवर्सूल के अंदर हम पास्ट का कुछ भी देख सकते हैं तो करंट गेम के टाइम से 400 इयर्स पहले जो इन्हें पे एक एक्सीडेंट हुआ था वो जिसने किया था द डॉक्टर The Fatui? Just to create a minor in... That's it? That's why you... Look how even the righteous soul is filled with venom when faced with its demise. Doctor. My device functions precisely. It is easier for a person. Make no mistake, even without you. That... If you give him my heart, tell him that he has nothing to prove to anyone. Because not everyone just wants to use other people. The only... What a beautiful way to see the world. It almost makes me feel a little guilty. Think of me as a monster, God or level a का हो गया demon, ना? if you wish. At least this way your death is not a consequence of your own folly turning you into an easy target. You simply lost to something more powerful than you could ever hope to defeat. I say, Mr. Niwa, let's see what happens. Will your puppet friend become a human? No, Mr. Niwa. All right. Jester, I have completed the task you gave me. I'd like to introduce a puppet to you. Hey! Dottore. Good. Was that the doctor? Did he turn into a But why did we When I touched the doctor to confirm whether he'd eliminated all his segments, I read this memory in his mind. You have to admit, it... Maybe so, but it means nothing. Does it? But this memory shows that Niwa didn't betray you. He never meant for you to be the one to take the device into the furnace. You know very well what that means. Even more so... Let's give him some space. We need to give him some time to process his emotions. I'm still confused about the Tatarasuna incident. So, the doctor... Nobody has ever deceived you like that, Paimon. It's natural that you find it difficult to understand. Perhaps he needed to learn this someday, so now you have the complete picture. Katsuragi took the Kabuki Mono to live with the people of Tatarasuna. Later,
The doctor showed up, disguised as a mechanic from Fontaine. And that it was all a horrific experiment planned by the doctor. Everything he did was just to plant seeds of disaster in Inazuma that would bear fruit in the future. Of all the unwitting participants in the doctor's experiment, the balladeer after the events you just saw in that memory. The doctor put Niwa's heart into the device and handed it to the balladeer. Then, he instructed him to enter the furnace and absorb all the filth caused by the smelting process. The load was far beyond what he expected, but the balladeer survived. He left the furnace in sheer exhaustion and said to the mechanic, "This device seems to have protected me." The mechanic answered, "Niwa fled this place for fear of punishment, but he left you a gift. He said it's the one thing that you've been looking for." He took it straight from the chest of one of his innocent servants. The mechanic removed the withered heart from the device as he spoke. The balladeer was stunned that such unthinkable cruelty had brought him the thing he'd been longing for his entire life. A heart acquired through cold-blooded murder is a cursed thing, but it had protected him from the filth. He thought Niwa had completely betrayed him, and yet this very betrayal had ensured his survival. Overwhelmed with anger and sorrow, the balladeer threw the heart to the ground and left Tatarasuna without Holy moly! So the doctor killed an innocent man and pinned everything on the victim? Yes. Only if he understands this can he choose a new path forward. Satori, you brazen-faced... Niwa didn't run from justice. You killed him. Shall we see how he's doing? Hey, you alright? That's a scary expression. Are you worried about me? If we didn't have such a history, I'd almost think that qualifies me to be your friend. It won't. I'll keep my end of the deal. Hey, are you investigating the stuff we want to know about? That's why we're here. But unfortunately, there's no information about the Descenders in Irminsul. Even if you can't find anything, that seems to confirm it. Irminsul does not keep records on the Descenders. Anyone who comes from beyond this world is not counted as part of Teyvat. Oh, does that mean we have to leave empty-handed? Don't thank me just yet. You look really upset. Well, since Irminsul was a dead end, I guess Huh? The reason why there are records about your sister in Irminsul. It might have something to do with Conria. Apparently, Conria was her first destination when she arrived in this world. Plus, she only came to this world because the heavens responded to the summoning. The heavens... The Jester told me this himself. You can take his word on this. He was a royal mage in Conria, and lived with your sister for a time. भाई साहब पटवी के अंदर जो एक बंद है जेस्टर वो कानरिया के टाइम से एग्जिस्ट करता है इसीलिए तो फटुई ये है यार पहला हुआ जेस्टर कानरिया से वो फिर डोटोरे 400 साल ओल्ड है और इधर लिखा यू कैन टेक दिस वर्ड ऑन दिस ही वाज अ रॉयल मेज इन कानरिया एंड लिव्ड विद योर फॉर अ टाइम तब ट्रैवलर के जो सिबलिंग है के साथ एक सर्टेन टाइम तक कानरिया में दोनों थे एक साथ दोनों एक दूसरे को जानते हैं ओ बिछड़ा हुआ प्यार मिलने वाला है सामने जाके I don't know the details. It's up to you whether you want to believe me.
Did you get all that? मतलब बिछड़ा हुआ प्यार मरने वाला है भाई. Does this info count towards my mission? क्या बात है? It wasn't from Irminsul. It was very valuable. Good. In that case, I'll take some time for myself. Lesser Lord Kusanali was right. My power's all but completely spent. Even if I use all of the divine power left in me, I can't sustain this shield for very. I shared a secret with you, and now you owe me. So in return, I'd like you to answer a give me your hand. Can you hear my voice inside your head? No, I can't do anything like that anymore. At most, all I can do is exchange. So tell me, in this world, is it possible to change the past? Done. Huh? What the? Nothing. I was just thanking him for helping me. So long. I suggest you get yourselves out of here quickly. Where are you going? Hey, wait up! Didn't you say not to go running off? Fast reaction time. But I don't think we'll be seeing each other again. From this day forth, the names Balladeer and Kabukimono will cease to exist. Those who died in Tatarasuna because of me deserve another chance at life. Hey, Balladeer! Don't do anything stupid! You know, I never did like insects. Hordes of the puny things swarming together can be a real nuisance. But if a colony of harmless ants isn't threatening anyone... Balladeer! Balladeer! Uh-oh, he disappeared. Oh no. Oh, Nihita! Traveler, Paimon, Balladeer. What happened? It was the Balladeer's fault. I didn't think he'd be capable of something like that with so little. Did he keep some of his power hidden when he was defeated? Where the heck did he go? Don't be. It's not your fault. We're running out of time. We're out! And we're out. This is an emergency. I'll have to ask you to stay here for now. Everything's arranged, and nobody will disturb you. I'm sorry, but this isn't An emergency? How bad is it? Don't worry. If my assessment is correct, though there may be some minor disturbances, it won't lead to a disaster. Her voice has gone. Paimon can't shake the feeling that something really big has happened. What do you think the Balladeer meant? And why did he suddenly grab onto you before? He wants to change the past? But surely that's impossible! Right! You can't just rewrite history. It's like, imagine Paimon drank all the water in this inn. Even if no one was Ooh, Paimon's so confused. Huh? Ah! Sorry. Paimon accidentally... But erasing yourself from history? It's unthinkable. Is that really possible in Irminsul? There's no way he'll actually succeed, right? Otherwise, won't everyone who's connected to him... There's
nothing we can do about it at this point. Hey, have you got any ideas on what we should do next? Seems like now there's nothing left for us to do but to go to sleep. But, so, alright. Paimon and Drayan chili chicken! Oh! Um, what do we... Paimon was, talking? Huh. Is that a food too? What's wrong? Your eyes are like saucers. Was it something... So, the... Eyes. Okay, sure. Where are we going? Huh? Paimon, but is everything okay? That story. Ask me what? Ask me again? Ah, it's been a while. Of course. Go ahead. Oh. Now there's a question I wasn't the once renowned Raiden Gokuden, comprised of 5 branches. The art of forging most of the great swordsmith but fortunately, Kaede Harakazuha recently returned to Inazuma and took up the mantle of the Ishin art. Now, 2 clans remain. If my memory serves me right, you yourself were present when he forged the Ishin. Oh, yeah, we were! We learned a bit about the decline of the Raiden Gokuden then, too. It seems like such a shame. That, in fact, this was not made known to me. He told me that, as we are both heirs to a branch of the Raiden Gokuden, there is no harm in telling you. But the Raiden Gokuden were the targets of a murderous rampage by a vengeful 400 years ago, so I'm told. There was a catastrophic malfunction in Tatarasuna's furnace. One brave swordsmith heard the commotion and chose not. Tatarasuna was home to a state-of-the-art forging and smelting up, knowing that they had just one chance to save countless lives. Mr. Niwa and the swordsmith leaped together into the furnace. The furnace quickly stabilized, but the smith's death, though heroic, dealt a devastating in his heart. The whole of Inazuma was culpable in his tragedy. He hated the almighty shogun for her apparent indifference towards his father's death, and he hated everyone who had done nothing to try and save him. Powerless and destitute, the only legacy he had to pass on to his children was his hatred. Generation after... Alas. If only the story could have ended there. But 100 years ago, the then head of this family reached the end of his wits. Finally, he made a drastic decision. In his fury, he murdered indiscriminately
killing even bladesmiths from the Hyakume clan, which he belonged to. His goal was absolute, but when he came to the Kaedehara and Kamisato clans, his killing spree. That is why the Kaedehara clan and their Ishin art survived that. Was there anything else you wanted to ask? Kazuha? Why, yes. My pleasure. Don't tell, but on to the next. हमारी स्ट्रीम बंद है क्या? मतलब वो जो तुम आर्कॉन कर रहे हो वो स्ट्रीम पे ही कर रहे हो ना? या आप गेम खेल रहे हो तो अभी हिस्ट्री लाइन है 0.3 के बाद वो 3.3 के इसमें कर रहा हूँ मैंने अभी ये This is the चेंज Yashiro होगा Commission's headquarters, so... मतलब Traveler, it's been a while. If you're looking, पूरा चेंज हो जाएगा the commissioner is out कि on मतलब business. जो Miss पहले जो वो Kamisato is ड्रैगन्स standing in वगैरह for some थे meetings in the commissioner's वो place. मतलब What do you think? Shall we go in? Azuma फास्ट चेंज हो और सबसे खतरनाक बात ट्रैवलर को ये बात याद कैसे हुआ एंड पाइमॉन को भी याद नहीं रहेगा पाइमॉन इस वर्ल्ड से बैट से बिलोंग ट्रैवलर नहीं If it were anyone else, I couldn't allow it. But seeing as you're so close with the commissioner and Miss Kamisato, I think We'll be heading in then. Hello, dears. Is there some... Of course, traveler. Yes, I know. What would you like to know? Oh, they're both very well indeed. Lately, Miss Kamisato has been rather busy attending all kinds of meetings. As for the commissioner himself, well... So pretty much business... Very... Well, got any more questions? You're very Miss Kami. I must say, many things in Inazuma seem to have taken a turn for the better since you arrived here. So you're not just Miss Kamisato's knight in shining armor, you know. I mean, whenever the commissioner dines at home, Toma always joins him. I always find myself at the commissioner has such a busy schedule. They say it's because Toma's a much better chef than most. They get to talking about you sometimes too, you know. Always with a very fond tone. The way one would talk about dear old friends around whom Miss Kamisato. It's been many as someone who is so in the future if you ever do have wonderful Paimon likes it. Paimon's itching to try. Of course. Alright, goodbye for now. We're, great. Goodbye, ma'am. Don't worry. All right. Oh, are you two leaving already? Yep. Everything's taken care. Very well. Safe trip. Well, here we are. Do my eyes deceive me? Xavier? What are you doing here? I was in the general area and... We have some questions and thought you might be able to help.
Certainly do. I've researched the furnace here, and if there's anything you want to know, just ask away. Like the back of my hand. Make no mistake, I have been here a good many times before. Not only that, but I've met people in Inazuma whose families used to live in Tatarasuna years ago. They said it's, Oh, well, it's a long story, don't you know? The tale of Tatarasuna starts a long time. I'm told that its history is one of the most... A couple? One was just in the last few years, the other was several hundred years ago. A fun fact, I'm not the first Fontaine tech guy to come and work on it either. There was a guy back then too. They say he was a mechanic who consulted on a technology upgrade. Seems... Hey, weren't you gonna ask Xavier something about Tatar? Oh, I didn't realize you two were here for it. Me neither. Paimon doesn't know what's gotten into this one today. What brought this on? Did you just wake up today with a sudden burning desire for historical knowledge? Sure, go ahead. A kabuki mono? I do know the word. Inazuman for those eccentric types who always go around dressed to the nines. Just the sort of person that I'd like to meet, but sadly, I've never had the pleasure, nor have I come across... Of course! Oh, we're leaving? Oh, you're most welcome. Farewell. Looks like you got all the information you're looking for. Sure, but keep your smile, Spinal Crocodile. No matter what happens, come on. You got it? All right. Hey, it's them! Akaba, Sawada, you're still here? Indeed we are. If you have a... We have time. What do you... It's the same topic we discussed last time. Still looking for more info about Tatarasuna, huh? Should we join them? Unfortunately, we haven't made any real progress. Huh? Oh! I presume you'll want to read mine as well. Well, what do you think? Hey, Traveler. Remember how last time Akaba was saying how he wished he could gather more information about all this? Well, we just got back from Inazuma. What did you find out? It's a long story. Basically, we had... Wow. So many... Well. So it all... Ugh. So there's... This new information... Yes, okay, point... And they're back at it. Oh, so sorry. You're welcome. Keep us in the loop if you find out... Will do. Nahida, we're here! Traveler, Paimon... Ugh, where to start? Paimon hasn't had a moment's rest this whole time. The balladeer? You look troubled.
What's wrong? You look so upset. That's quite a story. So, this puppet known as the Balladeer erased himself from Irminsul, hoping that he could change the. But how was he? As the traveler said, he very nearly became Sumeru's deity. Admittedly, I remember it a little differently. I don't recall finding anyone inside the machine after we defeated it. Nevertheless, it does make sense. If someone were to successfully erase themselves from Irminsul, the world would change to reflect the new reality. So, you believe this person really existed? And we just don't remember him because... Yes. The traveler comes from a world beyond to that. That's why there's no information about him in Irminsul. So if there's anyone in the world capable of retaining memories from a Paimon's having a hard time understanding this. I can only make inferences based on the information we've been given. Something else worrying you? Something that you can't share? It couldn't change the fate of the ones who had died, right? Once the Balladeer realized he hadn't been betrayed after all, it must have completely changed his view of the people of Tatarasuna. He couldn't keep hating humans after that. The story makes sense. The Balladeer tried to achieve godhood with the doctor's help. That power then enabled— Yeah, it does. It just feels so Please wait a moment. Found it. This should be the one. It turns out that I have a strange way of confirming everything he has told us. What is it? A record from a personal collection. It was tucked away in a corner. You should take a look. Is this a fairy tale? I authored this record myself. Huh? You wrote a fairy tale? That somehow had— When combined with the Traveler's narrative, it's clear that this story is an allegory. Everything in it is a symbol— Hold on. So this record survived from— Yes. Any information about the Balladeer or the Kabuki Mono and other records will have been changed. But I wrote this story in a way that means it was left intact. Changing the information in Irminsul changes to that, but Irminsul can't change information that was well hidden in advance. I guess I must have written this story as a backup before the Balladeer entered Irminsul. That's incredible! And sending the Traveler into Irminsul with the Balladeer must have been a further precaution. I knew he'd remember everything. This story is abstract enough that it still resonates with the present information, but if we connect all the There was once a lone monster draped in fox fur. Once in a while, the monster would take off its fox fur at night and lament to itself as it gazed at its reflection in the water. But the monster soon found solace when another came to live among the foxes who was not there. The kitten too wished to become a fox, but its tail was too slender and it could not. Furious at this happy resolution, the monster lit a fire on the mountain. The terrified animals panicked as the fire spread.
The only way to extinguish the flames was to make a sacrifice. A gray fox stood up and addressed the monster. It said, "You are the cleverest among us. Surely you can help us find a way to solve the..." The monster smiled, led the fox toward the fire, and murdered it. The gray fox's heart was turned into a beautiful drop of water. The monster gave the heart of water to the kitten, telling him, "The foxes have decided. You are the one who must be sacrificed. Take this, quench the flames, and die for your fox kin." The fire was extinguished, but the kitten lived. The two promised they would spend their whole lives together, but the little bird did not have long left to live. It passed away soon after. Never again would it cherish a single creature, nor a single blade of grass that stood on that mountain. The kitten spent the nights wandering aimlessly, gnashing its teeth at the moon. How it wished to swallow the moon and devour the moon. I will become the new moon, the answer to everything. Then, no one will know that there were once birds, foxes, and cats in this world. And no one can know that they were different. We solved it! I remember now. This is not just the balladeer story. It is his very own memories. I made up to become a god. He was experimented on and modified countless times. It was brutal torture, and the only reason he was able to survive is that he was a puppet. This memory was extracted from him by the scholars. Presumably, they kept it to have something to defend themselves with. Creating a deity was just the first step. Some of them wanted to be able to control it. That's why they backed up his memory for later use. I buried it deep inside one of my own dreams, and then hid it inside an allegorical story so that it wouldn't be all— It's hard to believe that this person really existed, let alone that he tried to get rid of us on more than one occasion. Paimon has no memory of him at all. He completely The balladeer agreed to help me look for information about the Descenders, and although he was unsuccessful, he still helped you. Before he vanished, he confirmed an important detail. That Conria was where your twin first— We still don't know how the change to Irminsul will affect the senior ranks of the Fatui, but in all likelihood, they won't even remember their own Harbinger. It sounds like Paimon wouldn't like this guy a whole lot if he was still around. But still, Paimon doesn't like the way it all— This is why wisdom alone cannot answer all our questions. So the answer is not everything. When you give someone to others looking on, never forget that even— And that is what you have been doing. Yeah, Good idea. you got it. Come on, Traveler. You need to get out of your head for a while. You'll feel much— Let's go get a snack from one of the stalls in the Grand Bazaar. That'll be sure to lift our spirits. It must be really tough being the only one who remembers all that. But Paimon's own— We're here! What should we eat first? Hey, are you gonna answer or what?
whatever you want. Well, my mom will be right here when you figured stuff out. Then we can... What is it? Have you figured... Why'd you jump up on... Excuse me, boss. There seems to be a small problem with the last bill. Look. Hey! Hey, wait! Hmm? You mean me? No, not you. That kid! Didn't you see? Little rascal grabbed my last... Look, if you're gonna help out here, you can't keep spacing out. I wasn't paying close enough attention. Sorry, I think you're right. Maybe it's the city. It's so exciting. Who's that guy? You know him or something? He's who? You're a strange one, kiddo. I don't want to take... No, please. I mean it. You don't need to pay me anything. I'm just so thankful you agreed to take on an outsider like me. You're welcome, I guess. But I got bigger things to worry about. Look, we're all out of Sunsetias. Leave it to me. I'll find some more. Stop. I'm gonna level with you, kiddo. I've never met a worker who said they didn't want a wage before. And at first, I got greedy. Couldn't believe my luck. But I figured you'd start asking for something in return of... You don't want money. You don't take days off. And in your free time, all I see you do is wander around. That's right, I am. We can talk more about that later. First, let me get those fruits you needed. Sunsetias, was it? I'll be right back. Hey, what do we do now? Okay, stay out of... Yeah, this'll do. Even though you say he's the balladeer, what do we... Oh, all right. This should be enough. Guess I should wash the... Huh? You two over there. Is there something... You've been following me all the way from the city. I'd have to be have we met before? No, we haven't met. But I have no recollection. Are you Sorry, but I just can't take your word for it. a puppet? What makes you... Huh? You were right. I guess you do know me after all. That is not something I share with a lot of people. Look, I'm just a wanderer. But seeing as you've gone through all this trouble to track me down... Okay, but please let me... Are you really working for that guy? He said you... Yes, I ran into him out in the wilderness during a storm. And he let me take shelter in his cart. In return, I said I'd be his helper for a while. That's oddly nice of you. Let me take these back. Then I'll come with you. Then let's return to the city. Here you go, boss. I'll leave them right here. Oh, you really went and picked some more. Something's come up, and they need to borrow me. Sorry, boss. I'm afraid I'll... I was just about to pay you anyway. Go wherever you want, kid. Don't waste your time here. What? I get it, okay? You just wanted to help me out, to thank me for giving you shelter from the rain that day.
Even then, I don't understand why you're so adamant that you don't want any pay for it. But look, it was pouring down, and there you were, sauntering along without a care in the world, like you had nowhere to be and didn't even care that it was raining. Imagine you were me for a second. It's a little weird, right? Why is this guy traveling during a rainstorm if he's not trying to get somewhere? And why is he taking a shortcut through the open country if he's not even in a hurry? But anyway, taking you in didn't put me out even slightly. You don't owe me a thing for it. Certainly not all this. Your time is valuable. You know? But I don't... No. Then I suppose this is where we say goodbye. Don't mention it, kiddo. I've run into all kinds of characters over the years. I just hope you find your path. Thank you. All right, done. What's wrong? Huh? Hello. I do apologize. We found this guy in the street, but he doesn't seem to remember anything. You say that you are trekking across Teyvat to train yourself. Many other Inazumans who describe themselves in this way call themselves Shugenja. Well, it seems more relevant in my case. To me, it sounds like a plant with no roots. But these two claim that they know me, and that I have a hidden past unknown even to my... I wouldn't call it the past, but rather... I don't like to rely on using terms like this often, but in your case, it seems that it ought to be... Oh, like a past life? Yes, something far more distant than the past. So far away that you cannot perceive it. Okay, I have to ask. What was I like in my previous incarnation? Oh, okay. You want to tell me, but you can't bring yourselves to say it. Looks like if it's that difficult to talk about, I have no doubt it will be just as, but I'll be able to handle it. Is truth something you care a lot about? Yes. Then I'll be straight with you. In your previous incarnation, you nearly died because of what other people did. And many died because of you. As a non-human being, you drifted from place to place, never able to settle, even where you found status and identity. You adamantly believed that you were missing a heart. Actions rooted in persistence. I gave everything I had, but it barely changed. In terms of the outcome alone, I don't think I can judge everything I've heard purely in terms of right and wrong. Each choice a person makes belongs to a specific place. That is the nature of truth. If one thing is right, its opposite must be wrong. And yet... It seems like my previous incarnation wasn't the most likable individual. We're not trying to hurt your feelings or anything, but... yeah, we weren't your biggest fans. If we were enemies, why are you... This is so frustrating! This guy's supposed to be our arch enemy, but now he's just some random stranger. He's got so much to answer for, but... Lesser Lord Kusanali, as the god of wisdom, I trust that everything you told me must be true. Yes, it's all true. I can even show you the memories themselves. Please, I want to see them. Even though it will cause your present self great mental... I'm just a puppet. With no... Very well. Wait, shouldn't we... Don't worry. Whatever danger I might face, it's my burden to bear. Traveler, could I ask you to supervise him on my behalf? Oh, good point. Given your... Understood. Thank you.
no matter what lies ahead. This looks like Inazu. Right now, you're in a dream I created using information extracted from your memory. These memories will show you the raw truth. Sounds like an immersive You don't need to do this for me. I don't deserve your protection. We never give up halfway. Well, we had to. All right. Wanderer, this is the Shake Pavilion. In your Balladeer incarnation, this is where the Electro Archon placed you after your creation. You had a great many memories here. Is that because this is kind of like his... You could say that. I hear footsteps. This place is huge. No, there's no... There's someone past... You're awake. Huh. Not... This man is Katsuragi, deputy to Torichiyo's adopted son, Mikoshi Nagamasa. And the rest is history. In the original version of events, Katsuragi was ultimately killed by Nagamasa. Let me get you out of here. During the Tatarasuna incident, Niwa was murdered by the doctor, disguised as the second-in-command at Tatarasuna. Responsibility for what had happened, but Katsuragi had sworn lifelong loyalty to Nagamasa after the latter had once saved his life. At Katsuragi's insistence, Nagamasa killed him to put an end to the Tatarasuna incident. Katsuragi seems like he was a good guy. He looks like a warrior, but he has a kind face. Why couldn't he live a long and happy life? Nagamasa, I found this young guy in a cave sealed off by a landslide. He doesn't remember his name. Well, we need to call you something. I hear the workers are calling you the Kabuki Mono. That's fine with me. Katsuragi, report to Niwa. Tell him we have someone new joining us. Huh? What are we doing back here? Whoa, this is where you were... I was abandoned, like you. I lived here for a while at first, but... Okay. I heard my mom and dad used to make swords. He kept coughing all the time, just like me. Then Mom started coughing. But you can't. You promised me. Yup. We're family now. We're gonna be This child didn't have a name. Or rather, the balladeer didn't know what to call him. His father died before he could name him. After his mother died, the child stayed in their straw hut alone. Some of the neighbors helped to raise him. After leaving Tatarasuna, the balladeer ran into this child who didn't have a name, just like him. What happened to the child? He died from his illness while he was still very young. The balladeer came home one day and found that he had stopped breathing. Hey! What's wrong? Say something! You promised me we could be family! You're no different from Niwa and all the others. You betrayed me too. The voices have gone. It looks like the memory... Let's keep going. You do realize you're blocking my path. I come not to obstruct you. I've been waiting. What you are truly is a weapon. One that could be wielded with an iron will. Or you could continue to drift aimlessly. Are you trying to win me over? Long-fated rebellion has begun. Why not take your place at the banquet and join those who shall feast?
right now. Looks like I went too far. This place is dark. Paimon knows this place. It's in the original version of events. The traveler once encountered the balladeer. Such a creepy atmosphere. And so... Hey, look over there. Well, well, my fair lady. Is this rundown factory and these incompetent fools all for me? Huh. What do you have to gain from belittling your subordinates? Perhaps you find fighting in the abyss to be a more meaningful use of your time? Oh, but of course, even this pales in comparison to being experimented on by the doctor. What a sharp tongue you have. Funny how negotiating never seems to be your strong suit. For the task ahead, I suggest you keep your true feelings to yourself. Save your breath. I know what I have to do. I'm sure you think so, but I still think you need to hear it. Don't start thinking you're invincible. And don't let your emotions get in the way. Surely you're not worried about— I just can't have you getting in my way. You and Child never fail to find ways to complicate things. I'm merely lighting a little— Do you remember the last time you were here? That was a lot of swordsmiths you killed. I'm sure the descendants of the Raiden Gokaden are still suffering the consequences now. Look at you. Bye then. See you at the victory feast. Poor little tongue? She's playing with fire talking to me like that. Forget it. Someone might find me here any minute now. I should prepare to give them a warm The plot does not end here. There is more of this story to come. Yes. Why are you staring at me in silence? Can't you think of a nicer way to express yourself? I'm under no obligation to be nice to you. Besides, I thought nothing mattered to you except results in your own interests. Isn't that right, witch? Muddle-headed puppet. You're only number 6 because you can take more abuse than other humans. Do you really count that as an asset? You're about as much fun to be around as a raging inferno. But before we murder each other, it'd be best if we finish our duties. Emerge, right here. Nothing lasts forever. Shine down! No escape! Emerge, right now, right here. The more, the merrier. Right now. Can't run from death. Looks like we've arrived in Sumeru. Is that— Considering that Amorta's sage, Nafis, refused to join this— Welcome. I look forward. When do we start? You seem impatient. You should know that becoming a god is far from a trivial affair. The biological transformation is a lengthy process, as— Nothing worse than what I've been through before then, Doctor. You were the most resilient test subject I ever came across. Thanks to you, I was able to garner a great deal of information. Alas, after that— That was gracefully worded. Ever wonder what they'd think if they knew that nothing matters to you, apart from your crazy experiments? I suggest you speak to me in a more respectful tone, Scaramouche. The mere fact of your utility does not make you indestructible. the doctor again? That person gives off a very sinister energy. It's normal for him to give you the creeps. He scares the bejeebers out of Paimon. Let's move on.
You're a god. Do you think I'm evil? If you accept that he is you, just as you are you, then yes, you are evil. In your eyes, are there any differences between humans? Do you think there are any differences between your present self and your previous and future incarnations? If not, then what are the differences between humans and puppets? Whoever has tasted the joys and sorrows of life in the human realm is human. Whoever has loved and lost, cried with grief, howled with rage at the tragedy of death that eclipses the miracle of life, they are human too. I've seen enough of my past. If possible, I'd like to reclaim the sins that are mine to bear. No matter the consequences, I won't run from blame or punishment. Whatever I am due, let it come to pass. Can you return my memories to me? Huh? But won't that mean you'll lose your current... I've always believed that human lives follow a set of rules. With each person as a puppet living in a human world, my life is subject to the same rule. Regaining your memories means reverting completely to your previous incarnation. Are you sure you wanted to... I've lived with a void in my chest my whole life. My creator didn't need me. And ever since I awoke, I've just drifted from one place to the next. But then I met you. And I finally realized that reclaiming my missing sins might be my one opportunity to become my true self. I've always felt I have an innate tendency to yearn for something more. So I beg you, grant me this opportunity to gain a purpose, to change my destiny, and... Very well. Since your mind is made up, I will... You have made your decision. Now, take this. Set him free. A puppet? What's he doing here? It's... You're a human as far as I'm concerned. Everyone's here. Wonderful. What a fine blade. Nagamasa will be thrilled. This is... my... Is he alright? No way! Hey! Are you done yet? All worthless dross will be purged. That's why this won't be the end. Balladeer? Die. Oh, oh. Hey. This is trying my patience. Have you got all your memories back now? Questions?
Insignificant pest! At my command, you shall fall! Behold! Feeble human! Wretched vermin! The wind rises. My endless cycle begins! Swarm Fury! Insignificant pest! Upon the gale. The wind rises. Feeble human! Churn! Imbecile! Get out of my sight. It disappeared. What did you expect? I'd never lose to... There's that tone of voice again. You're deaf, wait. But it was you inside that thing too. Sorry. I'm harsh on myself and everyone else. Just the way I am. You sound like you're concerned about me, but don't worry. Thanks to you, even if I didn't change a thing, at least I now know the truth. The memory recovery seems to have been a success. This dream has served its purpose. Come on. Let's continue this. Welcome back, travel. You don't like being addressed by— It's fine. But I was just thinking, I should probably... After learning about everything the doctor did, there's no way I can carry on using a name connected to him. I'm not planning on returning to the Fatui, and they wouldn't take me back anyway. Recent events will have affected a lot of people, and they might not even remember who the sixth is. So, you're quitting the Fatui for good? It's like you said, Lesser Lord Kusanali. But that doesn't mean your own past has disappeared. Of course. And your main goal, for which you gave up everything you had, you weren't able to achieve it. I hope you can see in that changing the world, changing the past, changing the fates of other people, what you were looking for is complete annihilation. But this is just a fantasy. Even if the Balladeer is removed from existence, the world will not heed your will. Indeed. Do you regret doing all that when you've gotten so little in return? Even if I'm completely worthless, there's nothing in the world worth regretting. Lesser Lord Kusanali, you purposely left that information in Irminsul, didn't— Yes, and I took pains to make sure that you'd acquire that information naturally. Why would you go to such lengths? You trying to win me over too? In all honesty, your past experiences have made you a useful asset to Sumeru and to me. Winning you over was indeed a part of my plan, but before that, I wanted to tell you the truth about your past. If all I wanted to do was use you, then I'd be no different from the doctor. Very clever. I guess you could say that's one of my virtues. Utility to others is what gives me worth. So if embracing my— Oh right, I almost forgot. You're the good guys. You're into justice. Sorry if I have a slightly different perspective on things, but I don't feel like I've been duped. The wisest leaders are fated to end up with the best helpers.
I can live with that. I'm glad you're able to think of it in that, Traveler. In the future, I'll continue to search Irminsul more deeply and see what secret, including the beginning of your twins' journey recorded in Irminsul. What exact I will try. Traveler. After I dove into the information torrents in Irminsul, why did you go to Inazuma? So that's how you found out whose fate had changed. And how? Well, whatever your reasons, you did me a favor. And I'll do everything I can to pay it back. Borrowing and returning are the only real relationships between individuals. All balance. That's not true. A relationship between two people is not simply a ledger that can be reset to zero. I think deep down you realize this. People who show up in your life don't just evaporate like water drops and leave nothing behind. There is no some things in this world can never. Everything that you feel is real. To be human is to live with imperfections. But humans can't live without a heart, can they? Anyway, I gave up trying to be. You understand what pain is perfectly well, even without a heart. You're just bearing your feeling. The past is set in stone, but you can keep moving on. And the longer your future lasts, the shorter your past will become. Sounds like you've got a future planned out for me. Everything's ended up being pretty darn complicated. Paimon doesn't even know where to start, but the most... Then I guess I'll be helping you from behind the scenes from now on. I'm glad that you've accepted our proposal. Why the... Ooh! Paimon wants to pick an ugly nickname for you, too! Why? Because Paimon still doesn't... Then I hope we don't see much of each other in the future. A name is life's first gift. You did... The Traveler and Paimon have helped you a lot. If you can't decide on a new name, maybe you can ask them for ID. No! Paimon only does nicknames! If it's a serious... Have you got anything?
have no need for these names. Okay. Have you got anything? You want to share your name with me? Huh. Not a bad choice. Okay. Have you got anything? Are you sure? क्या दिया Okay. Have you got anything? I have no need for these names anymore. Okay. Have you got anything? मुझे
Are you sure? Oh, alright. There. Now you have a name of your own. What about a nickname? Are you done yet? Take your time. I don't need it. Everyone who manipulated me and made me You mean the Fatui? the doctor, at least. Now that your stance is... One more thing. There are still some descendants of the Raiden Gokuden living in Inazuma. I don't plan to leave, even though the event... I see. Huh? It's fine. Let them stab their blades into my chest. Alright, goodbye, wise deity. And you too. He's gone. What he went through today would... Yeah, true. But even so we can final... Thank you both. I've got it! I can end my novel with some words from Mikoshi Nagamasa. You mean because everyone else in the story... Yeah! I heard that Mikoshi Nagamasa died at a ripe old age. He's the perfect fit to be the narrator of the dark clouds had dissipated. Then, one night, all these expressions... Life is a... It's about time we had a break. As soon as you stop, all the tiredness and hunger comes rushing back. Wow! Huh? Look at them. Did someone break it while they were cleaning the room or something? You sound lost and confused. I know why you are troubled. Huh? Is there someone here talking? Unfortunately, the fate of Tevat cannot easily be changed. Perhaps a god may have a slim chance, but for anyone else... When a small animal runs into a tree trunk, though the tree may sway, it is not like a vase that falls to the ground. Whether it is broken, history does not change easily, but human hearts can. The voices disappeared. And who the heck was that? And what were they doing coming? Annie feels wrong to...